hello to each one. Hi, Kanika ma'am. So let's start the session with very fresh vibes. And before we start the session, again, I'm really thankful because you're giving me your precious time, which is the most costliest thing for each one of us now. And I am really hoping for you will take a lot of today. Okay. So uh, now it is okay. My voice is okay to each one of. I've raised the volume. Hi, Tripti. Uh, Great. Fine. Now the session will be in two languages, but I will not be repeating everything again and again because this is an introduction session, a learning session, a business oriented session, a money session. Okay. So आप में से कई लोग शायद बाद में बोलेंगे मैम हिंदी में रिपीट कीजिए मैम, फिर कोई बोलेगा मैम इंग्लिश में रिपीट कीजिए, तो रिपीटेशन विल बी वेरी लिमिटेड because this it will be around 90 minutes session, not more than that. Okay. So if anything you don't understand, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है, you write it down, आप लिख के रखिए, and then we will do the question and answer session post our session, because most of the things क्या होता है जब मैं बोलूंगी आपको पॉप अप होगा पॉपकॉर्न के टाइम जैसा. And then, Archana ma'am, maybe it's your thing because you are the only one who is saying कि आवाज नहीं आ रही है. आप मीटिंग लीव कीजिए और वही लिंक दोबारा ज्वाइन कीजिए. Because I am in a best reception area and today there is no rain also in my region. So maybe some congestion at your end. So please आप मीटिंग लीव करिए and then you join back. Okay. So you raised, I guess, your phone volumes. I can't raise. I have already done my volumes at my desk. Fine. So I'll try without headphone. If that may work, go with it. But most of the time, since I'm into my manufacturing unit, there might be some noises here and there. So I don't want you guys to get disturbed at any moment of time. Anyway, so let's hope now I'm audible and visible and clear to each one of you. Okay. So let's start the session. Before starting the session, I would be really, I'll be very clear with each one of. तो आज हम लोग कोई भी फॉर्मूला डिस्कस नहीं करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू शेयर एनी ऑफ द फॉर्मुलेशन. आप जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द फॉर्मूला, because to make a perfect candle one should understand the raw material thoroughly. It is exactly like making a perfect tea or a perfect pickle, achar, or any perfect recipe. जो आप लोग YouTube पे देखते हैं अच्छे अच्छे नाखूनों को डेकोरेट करके वो स्पैचुला डालते हैं and then they put it in a presto pot, they melt it on some degrees and temperatures, then they add mica powder or some colors and then they pour it in the container. What you see on YouTube or on Instagram mostly are UK, Korean or American YouTubers. What YouTube India is running is also not giving, definitely no one is going to share you the formulas for free. Okay, there are 100 reasons behind it. Everything has a quality control when it comes to a manufacturing, right? So we are here to talk about how the process goes, how much investment is required. We are here to think about as this manufacturing, small, big, that is different altogether, how this manufacturing and income from manufacturing can create magic in your life. Okay, हम लोग
किस तरीके से एक सेकेंडरी इनकम सोच सकते हैं टुडे, टुमारो एंड फॉर आवर फ्यूचर, राइट? सो understanding business is more important than understanding the formulas. Because if you will just know the formula, जैसे मैं सारे क्लासेस में बोलती हूँ, just because you know the formula या कोई रेसिपी आप संजीव कपूर नहीं बन जाएंगे, है ना? या जस्ट बिकॉज आपको सारे गम पद निशा आता है तो हम लोग जाके लता मंगेशकर नहीं बन सकते हैं. वी नो सारे गम पद निशा, राइट? But we can't be Lata Mangeshkar, we can't be Usha Uttup, we can't be Justin Bieber or anyone for that matter. What we should understand, what we know is only the terms. कि कैंडल्स की अगर बनाना है तो मुझे क्या लगेगा? वैक्स लगेगा, कंटेनर लगेगा, मोल्ड लगेगा, कलर लगेगा, फ्रेग्रेंस लगेगा. बट इतना सारा अगर मैं खरीद भी लूं, like if I'll buy everything from online, will I be able to make a correct candle? So just because by knowing Saregama Padanisa, we will not be able to sing correctly the notes and the tones. It's not necessary that just knowing about the raw material, you will be able to make a good candle. Okay. And what is the future of industry? How much money you can make and how much you should invest in it. That is the most crucial part for each and every entrepreneur. Because on YouTube, definitely people share a lot of good stories and correct knowledge, right? But it is more glamorous than what actual scenario is, right? So we are here to understand business. We are here to make money. We are here to understand how much investments are required to take out the money back in your pockets. What all organic options are there to make candle business going on in a correct platform without investing much on your marketing as an organic or a startup company. Okay, what all options are available from government, your own bank? क्योंकि हम लोगों का एक कॉमन होता है, जब भी आप कोई भी आइडिया, मेल हो फीमेल हो, एज, irrespective of age and gender, when we tell our friends and family that यार मुझे ना बिजनेस शुरू करना है, I want to start a business, people will first go बेवकूफ है ना, अंबानी बनने चले हैं, right? या अदानी बनोगे क्या? You know, these comments will come to you. I can assure you, there will be only 1% of people, they will open the hands and would say yes, go for it, I am there for you. So this is one of the darkest truths when you say about business. जब आप बोलोगे यार मुझे नौकरी करनी है, people won't say like that. It's a secured income. Whereas what my experience is it's an equal pressure in your job and in your business. In your job, your pressure of your higher ups, your promotions, your grades, appraisals, knowledge upgradation, and internal politics a bit, right? If you are going to be the part of it. And in business, you are the owner for sure. You can decide when to reply, when not to reply. You take the ownership of your income. Definitely, that ownership also has the same risk, investments, your time, your dedication, your commitment towards your business, and timely giving the product to your demand. Okay, so it's like, you know, हम लोग किसी मॉल में जाते हैं, it is all arranged in a proper form, so that becomes easy for you to pick up the things, right? Messy नहीं होता है कि चॉकलेट सेक्शन में जाएंगे तो नमक मिलेगा, नमक के सेक्शन में जाएंगे तो कोल्ड कॉफी का सेक्शन मिलेगा, कोल्ड कॉफी में जाएंगे तो वेजिटेबल्स मिलेगा. It won't be happening like that. So business is also like a mini mall. You have to be organized, you have to be committed, you know what you should be knowing कि मेरा स्टॉक कितना है और मैं किस तरीके से इसको प्रमोट करूंगी या करूंगा और मैं कब प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करूंगा. Because every business, it's like going to a new school. So knowing new languages, knowing new homework, new activities, new colors, new clay, new sketch pen, everything. So business is also like that. You start with basic concept, but when you enter, you don't know what your client is going to demand. Someone will ask for
we will go with container candles, like, the short jars or metal candles or a urli candle or something like that. Someone will pop up and will say, no, no, I will bake Kaju Katli, I will bake laddu, I will take some laddu candle, or I'll take some gujia candle or something like that. Or someone will say, I'm into spirituality and I want intention candle. So you don't know what will rise up and when the demand will pop up, right? When you enter, you come with your own plan. But when you go, you have to change your basic plans and do some adaptation with your fresh demand and supply plans, right? You have to be strategic in investments. You have to be strategic when it comes to investments and supply on demand, right? That is what this session is all going to be about. Okay, just give me a moment. Okay, so I want to know, before I jump into further session, how many of you are already doing candle business? I'm particularly asking about candles, okay, because this session is all about candles. I want to know how many of you are already doing some, may not be business, but did try making candles through YouTube. YouTube पे थोड़ा देख के, कुछ Amazon से kit मंगा के. Okay, Shrutika is trying. Or out of all 50, 55, one. See, it has to be a communicative session. If I will only talk, I know what I'm dealing into, right? If you will not talk, or if you will not share your thing, how will I understand where and to whom I am talking to, right? Because I can't see your faces, I can't see your expressions and anything. त्याच्यात तेल असेल तर त्याच्यात टाकू नका. नाही, त्याच पातेल्यात टाका ना, त्याच्यात हे टाकलं. So you want to start? Oh my God, what is the topic? Beginner. Okay, Ankita Roy. Fine. So I'm happy that most of you are beginners, and that's the best, because when you have a clean slate, it becomes easy to brush your painting, brush your writings and all, right? Samira, you're trying, great. And there is one more who is trying but failed into it. Right, great. So we will definitely be discussing about, see, these are, don't take me otherwise, failures is a very extreme word. Failure is something that you didn't try and you are losing it. Your trying is also one step towards it. Failing is judgmental. You might have not received the correct knowledge, और हम लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत होता है. इसलिए जब हम लोग किसी भी ज्वेलरी या ड्रेस शॉप में जाते हैं, एक बजट के साथ जाते हैं, एंड देन वी ट्राई टू बाय समथिंग इन दैट फिट्स इन आवर बजट. So if that fits in a budget and looks very nice, we like it. But if that doesn't fit in our budget, but still that we need it, then we say, यार नहीं, वो तो महंगा है, और ये मेरा choice नहीं है. So we give that thing. So failures is also a lesson. I failed a lot of time, and but I learned out of all the failings, because if I wouldn't have tried, I wouldn't have failed, and I wouldn't have been sitting in front of you and talking to you, and around more than 250 students in past 2 years. I will not exaggerate saying मेरे 5,000 students और 1,000 students है, no. Roughly 300 to 250 students in these 2 years we could gather, and out of which around 70% are running the business on a very successful way. Okay. So definitely I'll be sharing my bit of journey in this, but today is not my day, today is your day. I want you guys to get involved into this business. I want to create more entrepreneurs. I am the part of Startup India campaign, and I know what so much government is doing for new entrepreneurs.
A lack of knowledge can be the reason of failure in the business. So I will try my best. By the end of the day, you gain a knowledge about the business and come out of the fear of the business. Okay. So Kaku, right? So before we start a business, we should understand how much money we can earn about it. Okay. So थोड़ा हम लोग the business should be not like a jalebi going, jalebi कैसा होता है? शालिनी मैम अंदर से बाहर की तरफ खुलता है, राइट? पहले छोटा सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल. बिजनेस एग्जैक्ट अपोजिट होता है, पहले बाहर से, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, राइट? बिकॉज बिजनेस में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मैं इन्वेस्टमेंट कितना भी करना चाहूँ या मुझे कितना करना है. आई शुड नो मैं कितना कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ. ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस. जस्ट बिकॉज इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द आउटपुट आउट ऑफ इट, इट्स लाइक हम अपने बच्चों का जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं या हम खुद किसी कॉलेज को चूज करते हैं, व्हाट वी डोंट सी द कैंपस. Campus comes last. What first comes is what education we are gonna get. Namaste Thara ma'am. What education we are gonna get और इस campus में क्या package last year सबसे ज़्यादा लेके गए हैं लोग, right? Am I wrong? When we go for any campus interviews or anything, what we first do, or we select a college for our any further education, or even for us, preschool for our kids and all. What we first think is इसमें से कितने शानदार बच्चे निकले हैं या किसने सबसे बड़ा पैकेज इस साल का उठाया है, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती है. We don't think of education campus, that comes second, third, fourth and last part. Correct? So business is also like that. When we start a business, we should understand how much money I will get, what industry is running globally and within my own country. Okay, it is not about state. Business will always be global. You may start within a city first, definitely, then a state, then other territories, then the country and export, right? It is a stepwise. It's like a growing a small baby in a womb. So first you should understand how much industry is growing and how much industry is doing, right? So this industry right now is going from $28 million industry. Okay, candles industry is not a some lakhs or thousands industry. It is an industry running in $1 million. In next 5 years, it is expected to reach $32 million. Okay, so you can imagine how many zeros you are going to get and how many numbers before zero. So do not underestimate that ये तो हर कोई बना रहा है, मुझसे क्यों खरीदेंगे, राइट? तो बिस्किट भी हर कोई बना रहा है, हर 10 कदम पे चाय वाला है, हर 15 कदम पे एक रेस्टोरेंट है, हर 10 कदम पे एक मेडिकल शॉप है. Are they thinking the same? कि यार मेडिकल शॉप्स, if you will visit any hospital nearby, common walls हैं. They are so next to each other, but still making heck of a money, right? So do not underestimate this thought or think about it कि यार ये तो हर कोई बना रहा है, कोई मुझसे क्यों लेगा? क्यों बना रहे हैं? Because there is a huge demand. There is a huge lack of supply. And you are going to fill that lack. जितना डिमांड है उतना सप्लाई इंडस्ट्री में नहीं है. That is the reason there are lots and lots of entrepreneurs coming in the industries irrespective of a product. So you have to be very, very vigilant about your product, your industry, your money, your bank account. Everything is all about you. It's not a selfish thought.
because when you grow, you take the family ahead. When you grow, not only your family, like I am running a unit. I have 2, 3 people working with me. So it's not only me who is growing. Their families are also growing with me. With the salaries they are getting, they're able to, cater something extra in their life. So it's not a selfish thing to think about individual when it comes to a business. You alone never grow. When you grow, people around you grow. Your kids grow, your family grow. You are setting up a platform for your future, right? So maybe your kids down the line tomorrow maybe help you and grow the business much more better. So whenever you start a business, whatever thoughts people are giving to you, just take it. Don't make the baggage of it कि यार इतना तो निगेटिव बोल दिया है या इतना डरा दिया है. दे हैव जस्ट गिवन यू द थॉट्स. डरना है या उसको सजेशन की तरह लेना है, दैट इज यू, नो वन एल्स. डरना है तो भी आप ही डर रहे हो, वो लोग बता के आगे निकल गए हैं. दे आर नॉट वेटिंग फॉर यू टू डिस्कस अबाउट इट. दे हैव जस्ट गिवन अ थॉट एंड दे हैव लेफ्ट इट. यू आर द वन हु इज कैरिंग दैट बैगेज ऑफ थॉट्स कि बिजनेस में लॉस होता है, सैलरी में भी लॉस होता है, नौकरियों से धड़ाधड़ निकाला जाता है, निकालने का डर भी होता है. इट्स नॉट कि निकाला जाता है कि यार अब निकाल तो नहीं देंगे, प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, प्रमोशन तो होगा कि नहीं होगा, बोनस कितना मिलेगा, परसेंटेज कितना मिलेगा, राइज कितना मिलेगा. दैट इज ट्रू विद बिजनेस ऑल्सो कि प्रॉफिट कितना करेंगे. इस साल इतना डिसाइड किया था यार, नहीं इतना नहीं हो पाया है, इतना इन्वेस्टमेंट सोचा था उतना नहीं किया. इट्स द सेम. वहां कोई और आपको नचा रहा है, यहाँ पे हम खुद अपने लिए नाच रहे हैं. थिंग्स विल नॉट बी डिफरेंट. प्रेशर हियर एंड देयर will be almost at the equal level, right? But what I feel after working for 14 and a half years in a banking industry, when I started this business, still when I was working and I left my bank on a very happy note, I was prior independent and I became more independent after starting the business. Because then I can wake up at my time, I can sleep at my time, I can enjoy my holidays. I don't have to fill a request letter, waiting for approval कि छुट्टी sanction होगी कि नहीं होगी. And as and when you grow, your responsibilities also grow. So छुट्टी मिलना का भी एक pressure होता है. Whereas in business, you can rely on your staff and tell them ये करना है, and you can still enjoy your vacations with all good happy thoughts and everything. No pressure कि vacation में जा रहे हैं तो boss का call आ गया तो क्या करेंगे, you know. So that freedom I liked it. But this may not be story with you, because I really don't have any sorrow stories कि COVID में मेरे husband का job चला गया, he was not earning, and then I started my business. But I have very a high gratitude for all such females and males who are survived in COVID after losing their jobs or after losing the business and they're still standing, right? So it takes a lot of courage to stand alone and to start the things again. So when you start your business, it is really important to understand that you have to be strategic, how you plan your day in your office, how you plan your day in your house. Same is the way we are going to plan for your business. Okay. Now, when coming back to calendar industry, as I mentioned, it is a billion trillion dollar industry, not only in India, but outside the India as well. Okay. सबको लगता है, how many of you think export बहुत कठिन काम है, बड़ा डिफिकल्ट है एक्सपोर्ट करना, कौन एक्सपोर्ट करेंगे, ये लगता है वो लगता है, पेपर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक एक्सपोर्ट इज डिफिकल्ट? यू कैन राइट डी. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक एक्सपोर्ट इज डिफिकल्ट? You can write D. Okay. 1D. Others are very, others are very easy. Yes, difficult. Or D. Or Ruchi ma'am, Thara ma'am.
काउंटच नाही केलं पाहिजे, पॉईंट ह्याच्यामध्ये मला हे लक्षात नाही येत. फाइन, तो आउट ऑफ ऑल दिस आई बिलीव 1%, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है उनका भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो और 1 या 2% लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है. बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एक्सपोर्ट जितना आसान कुछ नहीं, एक्सपोर्ट जितना आसान कुछ भी नहीं है. हाँ, एफर्ट्स लगते हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पेशेंटली रखना पड़ता है. We do export the products, so I know how it is. क्लियरिंग एजेंट्स के साथ काम करना पड़ता है. एक वाया मीडिया भी होता है, थर्ड पार्टी जिसको कहते हैं, कि आपका फेस दिखेगा नहीं, वो लोग सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, मे बी इन कंटेनर्स, मे बी इन कार्गोज, and they will have their own export company. You will supply, you will get everything in rupees, and they will sell in dollars in other countries. So export honestly कहें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. डेफिनेटली सैम्पलिंग, अप्रूवल, उनकी कंट्री का जो लिमिटेशंस हैं या उनके कंट्री के जो लॉज हैं वो फॉलो करना पड़ता है, जो वो लोग ही आपको बताते हैं. आपको उस कंट्री का डेफिनेटली वैक्स नॉलेज होना चाहिए फॉर श्योर. उस कंट्री का अरोमा नॉलेज होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर शिपिंग टू, परसेंटेज नॉलेज होना चाहिए. Other than that, they will only guide you everything, including the box quality, including the wax quality, including the fragrance percentage, colors quality, and minimum box per box. Now, for example, when we ship to in 22-23 beginning, we ship to Finland. So in that country, they said, "Ma'am, we will our clearing thing will only be accepting the packages with minimum 15 kgs one carton." They ordered some 200 candles or so, and they said, "Ma'am, packaging should be one master carton should not be more than 15 kgs. Otherwise, they will tear out the box, they'll remove the extra grams or kgs, and they will not give it to us." So same thing happens in our country. Okay? जो ये सस्ते कपड़े हर माल वाले आप लोगों को मिलते हैं, 40 रुपए का पैंट, 50 रुपए का पैंट, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, इट इज दैट थिंग ओनली. जब कस्टम क्लियरेंस आता है, आप जब एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि मेरा एक बॉक्स कार्टन है जिसका 15 किलो वेट है, जब आपका शिपिंग होता है तो क्लियरिंग एजेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उसका वेट करते हैं. अगर ये 15 किलो का 16 किलो हो गया या 15 किलो 300 ग्राम हो गया, वो 300 ग्राम हटाएंगे, पूरा बॉक्स खोल के वापस से पैक करेंगे. अब ये 300 ग्राम का होता है बिडिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज बिड करते हैं, which is the thrash bidding also. There are different names in different countries and different regions also, depending on which port it is. Okay, so ये जो आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत सस्ते में मिलता है, बेसिकली ये इंडिया का ही होता है या किसी और कंट्री का इंडिया में आने के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेट में जो डिक्लेयर्ड है उससे ये वेट ज्यादा है, तो कस्टम्स वाले इसको रिमूव कर देते हैं, एंड देन दैट कम्स टू द लोकल मार्केट. दूसरी कंट्रीज में वही माल फार्म मार्केट्स में बेचा जाता है. सो डू नॉट थिंक दैट एक्सपोर्ट इज वेरी डिफिकल्ट. पेशेंस होना चाहिए. यू कैन डू ऑर्गेनिक export also. You can go to your nearest export council, nearest clearing agent. आप गूगल पे सर्च करेंगे, you will get a list of clearing agents जो लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, एंड दे गेट द ऑर्डर्स फॉर यू, बिकॉज जब वो क्लियरिंग एजेंट्स आपके लिए ऑर्डर्स लेके आते तो क्लियरेंस वही कराने वाले होते हैं. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम, क्योंकि वो लोग कभी इंडिया में कभी क्लियरेंस नहीं कराएंगे, क्लियरेंस दूसरी कंट्रीज का होगा. दे नो ऑल इन एंड आउट अबाउट कंट्रीज, दे नो ऑल इन एंड आउट अबाउट व्हाट पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू यू. ओके, सो ऑल दोज पीपल हु थिंक एक्सपोर्ट बहुत डिफिकल्ट है, आई होप इट इज क्लियर. विद इन कंट्री सेल करना और भी आसान है. कंपटीशन हर जगह है. इवन अ टूथपेस्ट has a competition, a soap has a competition, every product has a competition. So it's a part of a business, it's a part of a growth.
It's a part when we enter our first day in a school, right? It starts from that day. So do not think that you will get, you will get easily skipped out of it or wiped out of the competition. No, you are going to be the part of a competition 210% or a lakh percent. It's just that being consistent and delivering what you promise is ultimate gain. Now, for example, if we choose uh, silk chocolate and we open it and we find it rowel gone, will you like it? Will you like it? That I bought a silk, इतना सुंदर पैकेज सिल्क का है और मुझे सिल्क खाना था, बट मैंने पैकेट ओपन करती मुझे मिला है रॉवल गॉन या मैंगो मूड या पान पसंद. विल यू लाइक इट? You will not like it. That's very obvious. Now, when I am saying my candle will lit for 30 hours, one will not expect to lit it 30 hours, but someone will definitely expect to lit it for 25 hours to 28 hours. And if it is shutting down at 5 hours, definitely no one is going to come back to you. That's what I am trying to tell you. When you say that it is going to lit for 30 hours or it is going to give the aroma, pleasant aroma, and this is the shell life of the aroma, then and then only it is going to be a repetitive order. And mouth publicity से अच्छा कुछ भी business नहीं है. हम लोग ही कितना एक दूसरे के साथ बात करके ब्रांड एक्सचेंज करते. इवन स्मॉल काजल, लिपस्टिक, कोई कुकीज, केक का शॉप नियरेस्ट, किसी ने हैंडमेड केक बनाया है या कोई ग्रीटिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है. वी आर द चैटर बॉक्स. एवरीवन. इट्स नॉट अबाउट बीइंग फीमेल. यू आर अ चैटर बॉक्स. मेल्स आर ऑल्सो अ चैटर बॉक्स. फीमेल के पास थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, मेल्स के पास उतना नहीं है जितना हम लोग चैटर करते हैं, बट डेफिनेटली दे आर ऑल्सो चैटर बॉक्स. They also have a lot of knowledge and that marketing helps a lot. तो आप चैटर कब आपका बिजनेस तब ग्रो होगा जब आप लोगों के होठों तक आएंगे. आप लोगों के हाथों में तब आएंगे जब आप पहले लोगों के होठों पर आएंगे. When they'll start talking about you, they will start more about your product, more about the aromas, more about delivering the product, more about packaging of the product. Then and then only your brand will grow eventually. It's not overnight, but it will definitely be taking a good amount of time and dedication and consistency while you're delivering your product. Okay, so when you say that I am a candle maker, you should actually definitely be understanding that it is very important for you to deliver what you are actually narrating to the people. Everyone with me? सबको समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? All we are on the same page. कुछ कुछ जा रहा है अंदर, right? Just hold. So that is how you are going to deliver the product to each and every one. Now tell me, how many of you think कितना investment करना पड़ेगा to start a business? पैसे कितना आना है वो तो पता चल गया. To start a business, how much amount? 3 to 4K, 2000 or 3000 or
मुझे नए लोगों से आंसर चाहिए। 10,000, 15K, ओके, और हो गए 5, ओके। So thank you so much for all the responses. Now to start a business, you will honestly will need roughly your raw material around 3,000, your raw materials. Now the raw material that will include your waxes. We will also be talking about waxes, aromas and everything. That will include few of the colors and few of the aromas and containers. Okay. So minimum to minimum in your raw material, you should invest 3,000 to start your business. Okay. Then when you will actually understand making candles, then comes your packaging part. Packaging, if you will search at your local or on India Mart or such global platforms, you will get it packaging at a very cheaper rate. Now, even on Instagram, people may not be there on Google at your local, but you may find people in your local area selling on Instagram or Pinterest or Facebook also. So we usually try to jump on Amazon, Flipkart and Meesho to find a packaging, but definitely they are costlier than your local vendors because they also charge their own fees to sell any product on their platforms. Okay, so that is a basic investment that you will need to start your business when you are coming to a candle industry. Now, can you tell me how much profit you can earn in it? Profit percentage क्या होगा? कितना प्रॉफिट्स कमा सकते हैं? कितना प्रॉफिट्स? 5 times, ओके, और 5 times, ओके, 50%, 30%, 70%, 20%, 40%, 50, 100, depends on quality of the product, 50%. Everything that profits has nothing to do with the quality of the product. Profits is your take, completely your take. So great. So if I'll talk about the retail market, that is your MRP market. You can go up to 200% of your profits in your MRP market. And when it comes to B2B, depending on the quantity they are going to purchase, say suppose 50, 100. हाँ, ते साईडला हे इकडे नाही. त्याच्यावर ते स्पंजचे दाणे होतात, ते कापडेने हे करायचं. झालं बोलू? तिथे कापडाचे तुकडे करा आणि कापडाने करा, ते स्पंजचे तुकडे लागणार, तो अजून हे होणार. So in MRP market, it is 200% of your profits. Now, when you say profits, there are 3 types of profits or a 3 division in profits. First, profit की ये मेरा है, right? ये जैसे हमको आता है ना salary. So salary should be few percent in the profits. Then marketing profits. Then your wages profit. All together will make your final profit. Okay, so when you say profits, it is not only that will go directly to your pockets. One portion of it is going to definitely be your part of it, which is a outcome as a salary, right? That you will enjoy for your own sake. But rest 2 types of profits that will go back into your business and paying back the salaries of your staff, or again buying your raw materials as and when required. So when I say 200%, it should be divided into 3 different categories of it.
व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, मतलब जिसको लेमैन टर्म में वाइट लेबल बोलते हैं कि मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ बट सामने वाले को पता नहीं है, किसी और का लेबल उस पे लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको एक सेट प्रॉफिट करना चाहिए कि अगर मुझसे कोई 50 कंटेनर्स मंगा रहा है या 50 टाइप्स ऑफ कैंडल्स मंगा रहा है तो ये मेरा सेट प्रॉफिट है, राइट? अदरवाइज यू विल just keep on selling the product but may not earn the expected profit, क्योंकि कई बार हम लोग सेल्स लाने के लिए ये सोचते ही नहीं है कि हम लोग कितना प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपीज आ रहा है किसी प्रोडक्ट का और मुझे ये B2B का ऑर्डर है, बिजनेस टू बिजनेस है, और उस बिजनेस टू बिजनेस की ऑर्डर में उन्होंने मुझे बोला नमिता मुझे 100 कैंडल्स चाहिए और 100 कैंडल्स का ये स्पेसिफिकेशन सारा उन्होंने अपना डिटेल दे दिया है। आई एम टॉकिंग ओनली इन इंडिया बिकॉज एक्सपोर्ट इज वे बियॉन्ड द प्रॉफिट्स। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो व्हेन यू से, उन्होंने बोला कि ठीक है ये और आप मुझे कोटेशंस दे दो या आप मुझे पर पीस का रेट बता दो। अब जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगी तो एक होता है मेरा पॉकेट प्रॉफिट कि यार मैं इसके नीचे तो जाऊंगी नहीं चाहे मेरा ऑर्डर चला जाए, ठीक है? ये हर बिजनेस में सेट होना बहुत जरूरी है, ओके? अदरवाइज यू विल नॉट सीरियसली मेक एनी प्रॉफिट। तो आप में से जिनको ऐसा लगता है कि यार बिजनेस में कर तो रही हूँ या मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, बट हाउ आई एम गोइंग टू बी स्ट्रैटेजिक अबाउट योर प्रॉफिट, तो आपको यू हैव टू सेट योर पॉकेट प्रॉफिट फर्स्ट कि ये मेरा पॉकेट प्रॉफिट है, ये मैं इससे नीचे काम नहीं करूंगी या मैं काम नहीं करूंगा। So that can be 20, 30%, 40%, 45%, 20% depending on order, and if it is export depending on quantum, right? And then you will give it little bit higher rates more than it so that आप उनको आगे जाके कुछ डिस्काउंट्स दे पाओ। हम लोग कई बार क्योंकि 50 पीस का ऑर्डर आया है, पता नहीं अगला ऑर्डर कब आएगा, ये नेगेटिव थॉट्स का बैगेज लेके चलते हैं एंड वी गिव द लीस्ट पॉसिबल रेट्स टू देम। डू नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि इवन इफ यू गिव द लीस्ट पॉसिबल प्रॉफिट्स, दुनिया में वो लोग और 100 लोगों से भी बात कर रहे हैं। when now this I am talking may sound little complicated to you, when you actually give such negative energies to your money, definitely आप वही energies को कॉल करेंगे। Do not underestimate your profits. Do not doubt on your hard work at all. If you will not doubt on your hard work and on your product, people will buy it. Right? Gucci का बैग लेते हैं ना लोग, है ना? फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, ओरिजिनल, लैक्स, 10 lakhs, करोड़ में, राइट? अब अगर गुची ये सोचने लगेंगे कि यार कौन लेगा मेरा 1 करोड़ का बैग या मेरा 10 लाख का एक छोटा सा क्लच, है ना, या एक छोटा सा वॉलेट 2-2.5 लाख का, तो गुची आज गुची नहीं होते। हम लोग जब इन ब्रांड्स की बात करते हैं, यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट व्हाट दे हैव गॉन थ्रू दीज ऑल ईयर्स, व्हाट दे हैव सीन इन द मार्केट, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू बी गुची वन डे, वेरी सून, नॉट वेरी फ्यू पास्ट ईयर्स में नहीं होगा, राइट? हम लोग जो आज अदानी को देख रहे हैं या हम अंबानी जी को देख रहे हैं या टाटा को देख रहे हैं, जमशेद जी टाटा ने 20 साल में इंडस्ट्री खड़ा किया जब कुछ भी नहीं था, प्रायर टू इंडिपेंडेंस से। ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ क्लीनिंग प्रोग्राम। आपको अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस में ढूंढते आना चाहिए। आप लोगों को, कितने लोगों को पता होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, इंडिया में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास ढेर सारे डिसीजेस थे बिकॉज हमारे पास क्लीनलीनेस का अवेयरनेस नहीं था। जमशेद जी टाटा जो थे, उन्होंने सबसे पहले जापान से सोप्स बनाना सीखा, उनको वो आइडिया आया, एंड फर्स्ट सोप्स वर बॉट बाय हिम इन इंडिया। So that was the opportunity he could find it. जमशेद जी टाटा या रतन टाटा जी हम में से कोई एक बने हैं, पैदाइशी से नहीं हुए हैं, राइट? तो
You really need to read about your opportunities and find out the loopholes in the industry where you can reach out, and do not hesitate to reach out to the people. Do not hesitate, यार लोग क्या बोलेंगे, ये पता नहीं कौन से 4 लोग हैं जो हर बार बॉदर करते हैं, जो हर बार उठ के खड़े हो जाते हैं, कभी दिखते ही नहीं है, लेकिन वो 4 लोग, आई हैव नो क्लू वेयर फ्रॉम वेयर दे कम एंड वेयर आर दे एग्जैक्टली पुलिंग अस। बिजनेस, सैलरी, जॉब, ये 4 लोगों से नहीं चलता है, ये हमसे चलता है। हमारा घर, हमारा इनकम हमसे चलता है, वो 4 लोगों से नहीं चलता है। So always focus on the things what you are actually doing in the industry. Otherwise, you will only think of those 4 people and only negative baggages. Even if you wish to, आपके so called कर्मा में भी लिखा होगा ना, आप सक्सेसफुल बिजनेस बनेंगे या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बिकॉज ऑफ दोज नेगेटिव थॉट्स, एंड वो 4 लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पॉपकॉर्न के जैसे, दे विल पुल यू बैक। तो इनका जितना भी सजेशंस है, राइट इट डाउन एंड देन वर्क ऑन इट। All those things, don't take it as a critic, take it as a suggestion and just move forward. I still remember जब नैनो टाटा जी ने लाया था इंडस्ट्री में, एवरी बिग कंपनी वाज सेइंग अरे यार इतना पतला मेटल है, ट्रक साइड से जा रहा है तो नैनो डगमगा रही है, बट इट वाज नॉट फॉर हाईवेज, दैट नैनो वाज मेड फॉर internal community, internal communication within the city, or a little bit about 500 or some 200 kilometers away from the city. That car was not meant for highways where trucks are loading and big roads are going up. So rather than going and giving the thought process, what Tata Ji's thought process was an economical car for a middle class and an upper middle class family, or a teenager who can afford to buy 2.5 lakh car. That was the target audience. If you will not find your target audience, none of the business will go ahead. None of the business. Not even soaps, not even mukwas, pre-mixes, whatsoever you learn or you have a knowledge of. You should first understand your niche client. You should understand to whom you are going to cater. आपका क्लाइंट कौन है और किस एज ग्रुप के साथ आप शुरू करना चाहते हैं। कई बार हम लोग प्रोडक्ट्स बनाना सीख लेते हैं और फिर हमें लगता है कि, and I really believe in that every crawling people is our client for candles basically, or any product also. But strategically हमें अगर नहीं जा पाए हम लोग, तो हम लोग किसी भी एज ग्रुप को ढंग से केटर नहीं कर पाएंगे। So you have to just first write down, ये मेरा क्लाइंट है, these are my future clients, और I will go step by step from teenagers to youth to females to, हाँ कपड़ा नहीं व्यवस्थित, हाँ, to females, then senior citizens, then corporate, right? जब भी कैंडल्स की बात होती है हमें सीधा लगता है ये कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है, ये गिफ्टिंग प्रोडक्ट है। आई एग्री 100% विथ यू कि हाँ डेफिनेटली ये कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है, बट ये एक थेरेपेटिक प्रोडक्ट भी है। तो आपका क्लाइंट नॉट ओनली कॉर्पोरेट, आपकी क्लाइंट डॉक्टर्स, मेडिटेशन सेंटर्स, स्पा सेंटर्स, 5 स्टार होटल्स, योर ब्राइडल स्वीट्स या स्पेशल स्वीट्स जो होते हैं जो कॉर्पोरेट्स में वीवीआईपी लोगों को दिया जाता है, वो सारे लोग आपके क्लाइंट हैं। कई बार हमें लगता है कि अगर मैं डेकोरेटिव कैंडल्स नहीं बनाऊंगी या बनाऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा। ये एक 1% वाला सच है, 99% ये फेक है। आप डेकोरेटिव आइटम नहीं बेच रहे हैं, आप एक कैंडल बेच रहे हैं जो विजुअली सैटिस्फाइड प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब आपका कंटेनर अच्छा होना चाहिए, आपकी कैंडल में से अरोमा अच्छा होना चाहिए। हम कोई हैप्पी मैन तो बेच नहीं रही हैं जिसका कलर अच्छा होना चाहिए, जिसकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, स्माइल अच्छा होना चाहिए, उसका वो बैग अच्छा होना चाहिए। वी आर सेलिंग अ कैंडल।
तो कैंडल का बेसिक क्या होना चाहिए? उसका अरोमा, उसका अपीयरेंस, उसका बर्निंग आवर्स और उसका कंटेनर, राइट? अगर आप कोई भी बिग ब्रांड्स देखेंगे इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, they are not much into decorative candles. They are more into aesthetic candles. Now, aesthetic candles is like that even the container is very good looking. कि कैंडल लिट भी नहीं किया है तो वो एक कॉर्नर पीस है, या एंट्री में रखते समय उस कैंडल को रखा गया है इन अ वेरी गुड प्लेट और ऑन अ वेरी गुड स्टैंड. बट व्हेन यू मेक दीज मोल्ड कैंडल जैसे पियोनी, डेजी, laddu, kaju katli, these are one day stand and people will not lit it more because वो दिखने में इतनी सुंदर है. आपसे ऐसे कितने लोग बार बार कैंडल्स लेंगे जो दिखने में बहुत सुंदर है और वो लिट ही नहीं करेंगे? या बर्थडेज में कितना ओकेजन्स आएगा साल में, किसी का भी बर्थडे और हमारा बहुत भी बड़ा परिवार है या बहुत सारे भी फ्रेंड्स है, तो हर वक्त हम कैंडल नहीं देंगे. इस साल दे दिया, अगले साल फिर कुछ और सोचना पड़ेगा. सो जब हम बिजनेस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हाँ मुझे एस्थेटिक कैंडल भी देना है, क्योंकि एक जो नीश क्लाइंट है उसको डेकोरेशन से मतलब नहीं है, वो मेडिटेट करने वाले हैं, वो डिनर्स में कैंडल्स को यूज करने वाले हैं, वो किसी हाउस वार्मिंग में कैंडल्स को यूज करने वाले हैं, वो किसी वीवीआईपी स्वीट्स में, स्पाज में यूज करने वाले हैं. तो उनका मेजर कॉन्सेंट्रेशन होगा जार का अच्छा दिखना और कैंडल लिट करने के बाद उससे सूदिंग अरोमा आना. दैट विल बी देयर कॉन्सेंट्रेशन. whereas when it comes to festive candles, तो डेफिनेटली पीपल विल थिंक अबाउट लड्डू, काजू कतली, गुजिया. लेकिन आप ये सोचिए ये साल में 4 दिन का फेस्टिवल है, तो सारे साल में आपका ये कैंडल्स लोग कितना खरीदेंगे? आई एम नॉट सेइंग बनाइए मत, डेफिनेटली बनाइए. उसका एक क्वांटम, उसका एक थ्रो, उसका एक टाइमिंग है, राइट? पर जब आप कंटेनर कैंडल्स बनाते हो, मतलब इस तरीके के जार्स में कैंडल्स बनाते हो, तो वो आपका 365 डेज का प्रोडक्ट बन जाता है. जो भी आएगा वो डेफिनेटली इसको खरीदेगा ही खरीदेगा, राइट? सो ये आपको कैंडल्स में आने से पहले समझना पड़ेगा कि कंटेनर्स का कुछ पोर्शन होगा, कुछ पोर्शन सीजनल होगा, कुछ पोर्शन आपकी फॉल, मतलब जो आपका दिसंबर अक्टूबर वाला टाइम है जहाँ क्रिसमस ट्रीज बहुत चलेंगे, टेडी बियर्स बहुत चलेंगे, हैलोवीन कैंडल्स बहुत चलेंगे, आपके सांता क्लॉज कैंडल्स बहुत अच्छे चलेंगे, आपके बेल कैंडल्स बहुत अच्छे चलेंगे. यू हैव टू सेट, जो हम लोगों का 6-12 महीने का जो मंथ है, यू हैव टू एक्चुअली बी, मतलब उसको तोड़ तोड़ के यू हैव टू थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? देन केटरिंग टू आपके रिटर्न फेवर्स फॉर मैरिज, रिटर्न फेवर्स फॉर हाउस वार्मिंग, रिटर्न फेवर्स फॉर योर pre-wedding sessions, return favors for your first birthday, first anniversary, 25th anniversary, 75th anniversary, 50th anniversary, jubilee anniversaries, and different corporate people. So this section will be altogether different because वो लोग multiple products आपसे खरीदेंगे, not one. Even if they are buying candles, they'll buy 2-3 different candles with different dimensions and they'll make the hamper out of it. So always remember, you are not only catering laddu and not all the time catering the container candles. You need to distribute your candles in different sections. Now I want to know how many of you have already learned candles. Not from me, anywhere that मैम ये सीखा है थोड़ा सा, क्योंकि कोविड के टाइम पे बड़ा 99, 199, 249 वाला एक एरा चल रहा था. सब 49 से 99 वाले एरा चल रहा था. सो आई वांटेड टू नो कि आप में से कितने लोगों ने वो टाइम पे कोई भी छोटा मोटा कोर्स किया है, यू नो अबाउट इट. सक्सेस, फेलियर्स, वो उसको सब पीछे छोड़ देंगे. आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ मेनी ऑफ लर्नड इट, मेकिंग इट एंड ट्राइड इट. Okay, Monali ma'am and Triveni ma'am has learned it and tried it, I hope. बस दो. Payal ma'am, okay, great. 3. Fine. Now, before you start your business,
you should always learn about the product. Okay, do not take me wrong or otherwise, I'm not here to promote mujhse hi seekho, but make sure that when you enter into industry, you know about the formulas, you know about the government thing, you know about the licenses required, you should know about where all I can invest and how I can move forward. What is the standard formulations of delivering the product correctly? Otherwise, just by watching some YouTube videos or some pre-mixes, which I have heard recently in past 3-4 years, that you will need a blend for a pillar candle, you will need a blend for a container candle, you will need a blend for a wax sachet, you will restrict yourself in your manufacturing. Okay, you should know how you can create your own blends for the best candles. Okay, जैसे चाय हम लोग बनाते हैं, someone will make with regular tea powder, someone would add elaichi, someone will add. Yes, Kritin ma'am, we are going to do the demo, we are going to talk about the waxes also. So you should know when to add elaichi, when to add adrak, when to add what, right? So that even with one single tea powder, you will be able to make a very good tea, right? Now, coming back to waxes, now you tell me how many types of waxes you know. आप में से कितने लोगों को waxes पता है? क्या होता है? कौन कौन सी waxes होती है? You can write, you can talk, speak, anything. Soya, right? और soya and beeswax, yes. Beeswax, right? Gel wax, true. Soya gel, vegetable wax, right? Bees and gel wax, correct? Gel wax, right? So now, सोया जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, right? So this is basically the soya. This is 100% A++ grade soya, which is hard soya. ये टूटेगा नहीं. Okay, this will not break off with your hand. You will need something to break it off, right? Then comes your soya, which is a very creamy soya. जब वो creamy soya होता है, so that soya is basically only used for your container candles. It can't be used for your mold candles. Demold नहीं होगा because it is very, very soft. Then is your beeswax. Beeswax is basically an outcome of from the bees hive. Okay, so आपका जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी में से वो वैक्स बाहर निकलता है, right? Then comes your soya flakes. Soya flakes बिल्कुल रवा जैसा वैक्स होता है, which is not very actually in India जो सोया फ्लेक्स मिलता है, आप उससे कैंडल्स नहीं बना सकते हैं. उसमें आपको कोई ना कोई कैरियर ऑयल डालना पड़ेगा, आप तभी उससे एक कंटेनर कैंडल बना सकते हैं. सोया फ्लेक्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, दैट इज 100% सोया. ओके, जो आप अदर कंट्रीज के वीडियोस देखते हैं, जो फ्लेक्स जैसा ही दिखता है, जिसमें हम लोगों ने देखा होगा सोया 464, 474, 755, 555 एंड डिफरेंट सीरीज एंड नेम, जो कैंडल साइंस करके ब्रांड है, उनका आता है. तो दोज आर बेसिकली प्री मिक्सेस. तो दो प्री मिक्सेस जो है वो कंटेनर्स के लिए अलग आती है, आपके मोल्ड के लिए प्री मिक्सेस अलग आती है. तो दे आर ऑलरेडी मेड द ब्लेंड फॉर यू. बट अगर आप कंटेनर कैंडल से, जो प्रीमिक्स कंटेनर कैंडल के लिए, उससे अगर आप मोल्ड कैंडल बनाना चाहेंगे तो वो कैंडल बनेगा नहीं. दोनों भी सेम ही दिखती है. तो उसमें कॉम्बिनेशन पैराफिन प्लस सोया हो सकता है, कोकोनट प्लस सोया हो सकता है, सोया सॉफ्ट प्लस सोया हार्ड हो सकता है, वेजिटेबल वैक्स प्लस सोया वैक्स हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन उनका जो सीरीज का है, उसका प्री मिक्सेस का डिटेल्स उनकी बैग्स में आता है. बट इंडिया में जो फ्लेक्स मिलता है, यू विल नीड टू ऐड अ सम कैरियर ऑयल, जैसे पाम ऑयल हुआ या कोकोनट ऑयल, टू मेक अ कंटेनर कैंडल. उससे आपका जेल कैंडल बनेगा नहीं.
अगर आप उसे डायरेक्टली कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका कैंडल बनेगा, इट विल कम आउट ऑफ योर कंटेनर, और आपका कैंडल कभी भी लिट नहीं होगा, वो जलेगा ही नहीं, बिकॉज उसमें ऑयल ही नहीं है. ओके, देन डेफिनेटली योर जेल वैक्स विच कम्स लाइक दिस ट्रांसपेरेंट जेल वैक्स. आपको जब भी जेल वैक्स खरीदना है, यू शुड ऑलवेज प्रेफर द ट्रांसपेरेंट. ओके, ओपेक या येलोइश नहीं खरीदना है. अदरवाइज आपका ये जो जेल कैंडल है मे बी डाउन द लाइन 1 मंथ में, 2 मंथ में, 6 महीने में पीला पड़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी खो दे. इट इज हाईली फ्लेमेबल वैक्स. इसमें बहुत ज्यादा फ्लेम्स होती हैं और बहुत स्मोक होता है. तो जिनको हेल्थ इश्यूज है, लाइक जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, या जिनको सांस लेने की दिक्कत है, सेंसिटिव है टुवर्ड्स डस्ट, दे शुड अवॉइड मेकिंग कैंडल्स विद जेल वैक्स एंड ऑल्सो बाइंग the candles with made of gel wax. Okay, because जो fumes होती हैं, they are going to get more suffocation even if you are far away. over a period of time आपको sore throat हो सकता है, itching हो सकता है, nausea हो सकता है, headache हो सकता है. so these are definitely वो बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन में बनाएंगे लाइक सोया और जेल वैक्स का कॉम्बिनेशन में, देन दे आर रियली गुड टू वर्क विद. बट 100% अगर आप जेल वैक्स के साथ काम करेंगे तो बहुत लिमिटेशंस के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैच फ्लेम और बहुत इंसिडेंसेस हो सकते हैं. लास्ट फेमस इज योर पैराफिन. जो सबसे पहले बहुत ज्यादा फेमस था दैट इज पैराफिन, क्योंकि वो बहुत चीप था और बहुत रेडीली अवेलेबल होता था. बट सेम पैराफिन भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और उसके साथ भी आपको बहुत सारा प्रिकॉशन, आई मीन नॉट से लाइक बहुत सारा प्रिकॉशन, बट डेफिनेटली विथ यू इनहेल पैराफिन वैक्स while you are making or when you are using, सेम होगा, हेडेक होगा, नोशिया होगा, थ्रोट ईचिंग होगा, कफिंग हो सकता है. अस्थमेटिक पेशेंट्स को या सेंसिटिव नोज पेशेंट्स को पैराफिन की कैंडल्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए. These wax you will get it in white, yellow, brown, all those colors. The best is white for your candles to use. Okay, and your vegetable wax. Vegetable wax is basically 4-5 vegetables को mix करके उसका wax निकाला जाता है और उसका वो एक natural vegan candles आप बना सकते हो, right? Then part is your aroma. जब भी हम लोग अरोमास की बात करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि फ्रेग्रेंस ऑयल गंदी होती हैं या उनसे वो नेचुरल नहीं होती हैं या उनसे तकलीफ होती है, ऑल दैट. पहले हो सकता है, टॉकिंग अबाउट 15 years बिफोर, बट आजकल जो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल मार्केट में मिल रही हैं, दे आर रियली क्वाइट नाइस एंड यू शुड प्रेफर अ गुड ब्रांड ऑयल फॉर योर फ्रेग्रेंसेस. ओके, एंड always try to buy it from a manufacturer. Okay, जो ऑयल खुद बना रहे हैं and not a trader, right? बहुत सारे लोग हैं, I will not name it up because I don't want to throw any negative thoughts about it, because traders को honestly बहुत कम नॉलेज होता है when they sell the product, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा बार. उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज होता है, उन्होंने कभी भी 1-2 बार ट्रायल किया हुआ हो सकता है, बट उनको क्योरिंग पता नहीं होता है, उनको ऑयल बेस क्या होता है वो पता नहीं होता है, उनको सिर्फ अरोमा का नाम पता हो. इट इज लाइक यू आर बाइंग एन अगरबत्ती, दैट्स इट. So you have to make sure that when you buy a raw material, you should prefer directly from a manufacturer. और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफर करते हैं. कमिंग बैक टू हाउ दीज आर मेड, तो बहुत सिंपल लाइन में, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट. जब भी डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, यू गेट अ ऑयल. डिस्टिलेशन प्रोसेस मतलब, फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू टेक आउट एन कैलेंडुला ऑयल और से सपोज केसर, ओके, केसर का ऑयल निकालना है, तो देयर इज अ प्रोसेस जिसमें से डिस्टिलेशन प्रोसेस में से केसर का एक ऑयल निकलेगा. दैट ऑयल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट. नाउ दैट एब्सोल्यूट यू कैन नॉट यूज इट एनीवेयर. गवर्नमेंट ने इसकी यूसेज को बिल्कुल निगेटिव में डाला है बिकॉज इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, नॉट गुड फॉर स्किन,
not good to inhale for your psychological thing and also for rest of your body, not good to intake, क्योंकि बहुत सारे एब्सोल्यूट मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज होता है, राइट। फूड ग्रेड का प्रोसेसिंग करके बहुत सारे इस तरीके के नेचुरल ऑयल से मेडिसिन बनती है, राइट। फॉर एग्जांपल तुलसी हो गया, नीम ऑयल हो गया, सैंडलवुड, केसर, जायफल, क्लोव, ब्लैक पेपर, ये सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं। इनकी सारे की ऑयल्स निकलती हैं और ये मेडिसिन में यूज होता है, बट दे कैन नॉट बी कंज्यूम्ड in their absolute form, not at all, okay। then उसको dilute किया जाता है 3 different mediums से, one is water, second is alcohol and third is oil। अब जब ये dilute होता है in the with the help of these 3 mediums, आपको मिलता है essential oil। Still it is not recommended to use essential oil directly on your skin। आपने कहीं से भी खरीदा हुआ हो सकता है एसेंशियल ऑयल, किसी लोकल स्टोर से या अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी शॉप में, कहीं से भी अगर आप बॉक्स पढ़ेंगे उसका, तो उस पर स्ट्रेट अवे लिखा होता है नॉट टू बी यूज्ड और कंज्यूम डायरेक्टली, शुड बी डाइल्यूटेड विथ सम कैरियर ऑयल। अगर नहीं पड़ा है और आपके पास स्टॉक है तो आप जरूर देखें। These oils are very good for your skin. These are very nice for aromatherapy products. They are very nutritive for your skin, right? Then your synthetic oils. Synthetic oils are completely laboratory made. इनको भी dilute करते हैं अल्कोहल, वाटर और ऑयल के साथ। जब एक कंपाउंड बनता है उसको डाइल्यूटिंग एजेंट के साथ ही डाइल्यूट होगा एंड यू गेट अ इंडस्ट्रियल कंपाउंड, दैट इज योर फ्रेग्रेंस ऑयल। If you will use a good fragrance oil, which is oil based, you will never have any complaints about your candle aroma. You should avoid using any fragrance oil which is water based or alcohol based. तो ये कौन बताएगा? ये आपका पैकेजिंग बताएगा, जिनसे आप खरीद रहे हैं, आपका वेबसाइट से खरीद रहे हैं किसी, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। और अगर आप कहीं से मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं तो वो आपको पूरा COA रिपोर्ट देगा। So it is kind of very important that you buy oil-based fragrance oil. Now, when I make my candle, I use only oil-based fragrance oil, and we upfrontly give guarantee of 3 years that if you don't use my candle, or even if you use my candle up to 3 years, the aroma will not vanish out of it for next 3 years from the manufacturing. Okay, now why I can say, मैं क्यों ऐसा बोलती, because we don't use any chemicals when I make the candle. I have a very limited way of making my candle so that I can make a candle economical and I still earn good profits out of it. If I'll keep on investing more in raw materials, कि मैं एक हार्डनर भी खरीदूं, मैं एक शाइनर भी खरीदूं, फिर मैं उसके ऊपर से कोटिंग करने के लिए कुछ खरीदूं, आई एम टेलिंग यू, यू विल इनपुट एवरीथिंग। बट फॉर एग्जाम्पल इफ योर, आप में से जो लोगों ने कैंडल सीखा है या ट्राई किया है, बहुत सारे फॉर्मुलेशन में स्टेरिक एसिड बताते हैं फॉर हार्डनिंग। When you add stearic acid to your, which is not acid actually, it is a coconut derived product which is used as a hardening agent. So when you use stearic acid in your candle, it will actually over a period of time will deteriorate your aroma and start its own reaction with your aroma. That is the reason most of the sellers in industry they tell you 90 days के आगे मेरी कैंडल का अरोमा नहीं आएगा, या 60 डेज के आगे मेरे कैंडल का अरोमा नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस विबॉल और स्टेरिक एसिड और सम शाइनिंग एजेंट, बिकॉज दीज आर लैबोरेटरी केमिकल्स, they are going to definitely combine with your aroma and make their own some reactions. So when they will make their own reactions, aroma is going to go off and shade. You should try making it with all natural products without adding any chemicals to your product.
It's all natural, maybe with only your paraffin, which is still not a natural product. It is a petroleum product, but you can still make it only with paraffin and some soya combinations, so that your candle will last long and the aroma will still last long. All on same page? Any confusion up till now? If you have any confusion, please free to ask, because मैं बहुत बोल चुकी हूँ. अब आपकी बारी है. Any one of you who has any confusion or question, please raise your hand. I will be answering the question. Anyone? No? दो ही ऑप्शंस हैं, या तो मैंने जो बोला है वो समझा है, या कुछ भी नहीं समझा है. क्वेश्चन सभी होंगे, या तो समझा होगा या तो नहीं समझा होगा, राइट? So I take the plus side of it, that I tried my best to make you guys understand about the product and raw material only. Okay? पायल मैम, अभी इंडस्ट्री जो चल रही है, that is soya. Okay? But not denying the fact कि पैराफिन भी उतना ही compete कर रहा है, but those are bulk, मतलब huge manufacturers, जिनका डेली आउटपुट 5000, 2000, 3000 कैंडल्स का है, where they are making the pencil candles, tea lights and other decorative candles also. कंटेनर कैंडल्स जो बना रहे हैं, मतलब इस तरीके के जो कैंडल्स आज लोग प्रेफर कर रहे हैं, या पोस्ट कोविड जो लोगों को हेल्थ का अच्छा खासा नॉलेज आया है, दे आर प्रेफरिंग सोया, राइट? बट डेफिनेटली हर एक जो कैटेगरी है, जैसे या सीजन है, उस हिसाब से अभी दिवाली में सबको दिखने में अच्छा बट चीप क्वालिटी लगता है, तो डेफिनेटली पैराफिन की प्रोडक्ट्स ज्यादा चलेंगे. लेकिन स्टिल आई विल से पैराफिन 25% रहेगा, 75% इंडस्ट्री सोया पे ही रन करेगी, इवन फॉर एक्सपोर्ट. दिवाली में जो एक्सपोर्ट होगा अदर कंट्रीज में जाएगा, फॉर दिवाली, फॉर क्रिसमस, फॉर हैलोवीन, टिल 14 फरवरी तक जितना भी माल इंडिया से बाहर जाएगा, सोया ही जाएगा. 75%, 25% पैराफिन जाएगा. जो चर्च कैंडल्स होंगी, जो टी लाइट्स होगा, जो स्पिरिचुअल या इंटेंशन कैंडल्स होंगी, मोस्टली वो पैराफिन जा सकता है. बट आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो जो है, इट इज मोर ऑफ पैराफिन, राइट? सोया होल्ड्स वेरी नाइस अरोमा, and you should know that addition of correct amount of beeswax to your soya will improve the burning hours, will also improve your aroma holding capacity because of beeswax. Yes, Rabir, I hope I pronounced it correct. Yeah, nearby. I have some queries that Yes. soft soya wax अगर हम यूज करते हैं तो वो सिर्फ जार कैंडल्स में, am I correct or not? No. If you will use A++, that is the hard wax, which I have just shown you, the block, Yeah, that can be used for your mold candles. You mold don't need candles, any soft soya hardener wax. because it is hard enough. So when what I manufacture is with 100% hard wax. I don't use the softer one for my, even for my containers, neither for my mold candles. So my investment gets restricted to one type of wax. And we That means use a A++. lot of beeswax for, even if I needed to mold, for mold candles to have a good burning hours. For example, if you're going to burn a daisy, it is such a small candle, na? Some Yeah, 10, 15, 20 grams. So it won't burn for a longer time, like a floating candle. If it is there on the top of any container, it will melt completely. But if you're going to do it like a bouquet, or if you're going to put it on a melt, like a floating candle, got it it. is not going to burn much, right? Rest of the wax is going to get wasted. But to have Yeah, still better burning hours, we add beeswax to it, so that the burning will be slow, the flames will be subtle, there will be no high flames of it. So we control the flames and the burning hours with the beeswax. That is also natural wax. And we don't add any chemical to it. ओके. वन मोर क्वेरी, मतलब आपका जो कहने का सीन है वो ये है कि आप A++ वैक्स यूज करते हो, am I right? इसके साथ कुछ परसेंटेज हम बी वैक्स की यूज करते हैं तो वो हार्डनिंग में यूज होती है. बट Yes. स्टिविक एसिड अगर हम यूज करेंगे फॉर दैट सेंट
के लिए कि तो आपका जो पीरियड ऑफ टाइम है, आप बोल रहे हो आप स्टीविक एसिड यूज नहीं करते, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए स्टे करता है या फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ में। अगर हम फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ में स्टीविक एसिड को यूज मतलब मिक्स करेंगे कुछ परसेंटेज, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ 90 डेज तक स्टे होगा, है राइट? yes, why? Because see, citric acid is basically a coconut derived product. It has its own shell life. Okay, not more than 16 to 18 months or 12 months from the date of manufacturing. When you buy in small quantities from anyone, you have no clue what is the manufacturing date, right? या So it may not even last for 30 days because that product might, the citric acid might have the expiry very soon. ओके, एक और But लास्ट when you क्वेरी आप use the ये आंसर कर दो, natural, उसके बाद मैम आप अपना yes, yes, क्वेश्चन कर लीजिएगा। ग्लोइंग हाँ, पाउडर आजकल यूज हो रहा है कैंडल में फॉर द शाइन इफेक्ट, लाइक रेडियम शाइन। yeah, तो वो अगर हम किसी कैंडल के साथ वो ग्लोइंग पाउडर यूज करते हैं और फ्रेग्रेंस ऑयल भी डालते हैं, तो इट स्टे या उसमें भी मतलब टाइम ड्यूरेशन पे इफेक्ट होगा? same thing. See, anything you add a chemical will have some or the other expiry date. Nothing is, ओके when you say a natural thing, so for example, if you take a sandalwood powder or a multani mitti, these are natural products. There is no expiry, ओके right? Like cinnamon also no expiry because it's in its purest form. Now, when you make some byproduct out of it, some lotion, some cream or soap or some uptan or anything, it will have a shell life because now water is added, some bonds are made, right? हो असं दिसतं मागून पण लावा हा 2 तासांनी थैंक यू सो मच मैम। right? So, and to add a chemical to it will have a limiting period, even if you add the best quality of fragrance oil. Now, when I don't use my fragrance oil, like the stock kind of thing, the shell life of that not used product is 5 years. So, up to 5 years from the date I have bought it is not going to, next 5 years, the aroma is not going to go off at any cost, howsoever I keep it. ओके, गॉट Right? आंसर, थैंक। So, thank you. So that is the reason now I hope you understood कि formulas क्यों share नहीं होते, because it's not one thing that will make a good candle. It's a complicated but easy process. Once you understand the whole thing, like how you understand that adding XYZ product will over a period of time gonna limit the aroma. So same is true with type of wax also what you are going to use. Now people know about paraffin. Now paraffin also will come refined paraffin and non-refined paraffin. So you have to understand about refined paraffin quality and non-refined paraffin quality, right? Then you will able to make your candle correctly. One last point I will say, and then definitely I'm gonna take iPhone and Swati ma'am's question. Most of the time, what happens? This is what a common mistake, but this I will definitely say a mistake. Reason being, what we do is we keep on changing our vendor. क्योंकि आज ये फॉर एग्जांपल कोई मुझे 250 रुपए किलो सोया दे रहा है, अब वो आगे जाके 270 दे रहा है, तो मेरा 30 रुपए से महंगा हो रहा है। एग्रीड, 30 रुपए से महंगा हो रहा है, 100% एग्रीड। तो मैंने वापस से किसी को सर्च किया, वो मुझे 230 में दे रहा है, बट वो 230 में जो दे रहा है, यू हैव नो क्वालिटी चेक अबाउट इट। जो 250 वाला जो अभी आके 270 हुआ है, यू हैव वर्कड विद द प्रोडक्ट, यू हैव फुल कॉन्फिडेंस अबाउट द प्रोडक्ट। Because of the market scenarios, rate up and down होगा. For example, last year war हुआ, everything got very costly. अब import duties 25% से 50% कर दिया है. So depending on that, everything is going to get a little bit of hit for sure. अब आपको नहीं पता है, मुझको नहीं पता है कि जो रॉ मटेरियल हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल जैसे सोयाबीन, जो सोया वैक्स हम लोग यूज करते हैं, इट इज नॉट आर मैन्युफैक्चरिंग। सोया जो हम लोग बीन्स आती हैं, सोया बीन्स जो होती है, वो हमारे इंडिया में उसकी खेती नहीं होती। दैट कम्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ कंट्री. इट्स नॉट अ मेजर प्रोडक्शन. वी आर नॉट द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सोया बीन्स, right? If we are not the major producer of soya bean, how we are going to be the major producer of soya wax?
So we need to procure soya beans from somewhere else. So that shipping cost is going to cost and my ultimate cost is going to increase. This is how the things work, and that is the reason the rate goes up and down. Even if the manufacturing is done 100% in India, but raw material procurement will be from other countries to get the best product out of it, right? So if it is still going high, it's my suggestion you rise the rate a bit, because 30 रुपीज से 1 किलो से अगर 30 रुपीज से मार्जिन आपका बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज का आपका 30 रुपीज पर केजी आपका बढ़ रहा है, 250 का 270 हुआ, तो एक्चुअल में अगर आप पर ग्राम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 3 ग्राम से आपका कॉस्टिंग बढ़ा है, नॉट 30 रुपीज पर 100 ग्राम। 200 पहले 250 लेते थे तो 25 रुपए था, सीधा सीधा हिसाब। अब वो 270 हुआ है, तो पर 100 ग्राम कितने का हुआ? 27 रुपए का। तो 2 रुपए के लिए आप किसी और वेंडर को ढूंढेंगे, जस्ट 2 रुपए के लिए। मैं समझा पा रही हूँ इस चीज को? क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग जो कैलकुलेशन से होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि शायद डिलीवरी करेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं मैम, समझ में तो बहुत हम अच्छे। लोग थैंक यस, यू। तो 30 रुपीज का जो डिफरेंस होता है वो हमें 30 दिखता है, बट ग्राम से उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ 2 रुपए का फर्क पड़ेगा या 3 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग में आप सोचिए, जहाँ पे हम लोग थोड़ा हम लोगों का वेस्टेज कॉस्ट भी निकालते हैं या स्पिलिंग कॉस्ट भी निकालते हैं कि हाँ मुझसे गिर गया तो कितना कॉस्ट लगेगा, 1-2 रुपए का, वो तो वही एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 1 या 2 रुपए से। और अगर आपने 2 रुपए से बढ़ा भी दिया तो एक बार, इट्स लाइक कैंडल्स या कोई भी प्रोडक्ट आप सोचिए, एक चस्का है। हम लोग पहले अमूल खाते थे, फिर हम पहले तो अर्जुन या ऐसे छोटी ब्रांड्स आती थी, फिर अमूल आया, फिर हम लोग बस्किन रॉबिन्स पहुंचे, फिर हम लोग नेचुरल्स गए, फिर हम लोग किसी और ब्रांड के पास जा रहे हैं, अप्सरा होगा, नेचुरल्स होगा, तो भी ग्लोबली जा चुके हैं। हम लोगों ने अपना पेइंग कैपेसिटी बढ़ाया है, राइट? बस्किन रॉबिन्स का 150 का स्कूप खाते हैं और अमूल का 70 का भी स्कूप खाते हैं, बट हमने अपनी दुगनी कॉस्टिंग, दुगनी पेइंग कैपेसिटी बढ़ाई है। तो कॉर्पोरेट में भी होता है, आप 2 रुपए से प्रॉफिट कम करोगे खुद का तो ओवरऑल ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए लोग से कहीं से रॉ मटेरियल खरीदेंगे और आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा, तो 1 रुपए बचाने के चक्कर में ऑर्डर खो दोगे। तो प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर कि आप लोग अपने वेंडर्स के साथ ऑनेस्ट रहिए, उनके साथ चिपक जाइए फेविकॉल की तरह, क्योंकि आप जितना उनसे चिपकेंगे वो आपको और बेटर डिलीवर करेंगे, ट्रस्ट डेवलप होगा। और जब आप फ्यूचर में आपको क्रेडिट में काम करना लगेगा कि यार भैया 30 डेज का क्रेडिट दे दो या 45 डेज का क्रेडिट दे दो, दे विल बी हैप्पी टू गो विद इट, बिकॉज दे नो आप उनके रेगुलर बायर्स हैं, आप कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आप वेंडर चेंज करते रहेंगे तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा मेरे पॉकेट में पैसा है कि नहीं है, या इनवॉइस के अगेंस्ट आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, शिपमेंट मंगाओगे, फिर प्रोडक्ट बनोगे, टाइम क्रंच होगा। So stick to your vendors, talk to them, throw your ideas to them. They have a lot to share with you. आपसे बहुत एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं या कुछ नए खिलाड़ी भी हो सकते हैं जो आपसे नॉलेज मिले। So it's always a give and take. You have to have a entrepreneur. Just a moment.
Fine. I'm sorry, I had to take this call. There is some delivery coming in. Fine. So yes, iPhone, ma'am. हाँ हेलो मैम। Hi. मैम मेरा क्वेश्चन था कि समटाइम जैसे कई बारी पेटल्स पतली वाली होती हैं मोल्ड के अंदर, तो सोया पिलर के साथ भी वो अच्छे से नहीं निकलता, तो हमें कौन सी वैक्स यूज करनी चाहिए? That's what I'm trying to tell you कि जब आपको नहीं पता है अब सोया पिलर में क्या उन लोगों ने ब्लेंड बनाया है, प्रीमिक्स जैसा होता है ना, जैसे हम लोग माखनी प्रीमिक्स ले आते हैं, हर एक ब्रांड का अपना अपना स्वाद होगा, नाम तो सेम ही होगा, बट आप सुरुचि का लेंगे तो अलग आएगा, एवरेस्ट का लेंगे तो अलग आएगा, किसी घरेलू किसी ने बनाया तो आपका स्वाद अलग आएगा, नाम तो माखनी लिखेंगे, है ना। तो जो लोग प्री मिक्सेस बेच रहे हैं वो लोगों को खुद को आइडिया नहीं है कि वो लोग क्या बेच रहे हैं, क्योंकि वो खुद बना भी नहीं रहे हैं। यस। आपको खुद के ब्लेंड खुद बनाने आने चाहिए इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, or for that matter every industry. You should know, you should be very independent of making your own batters, right? तो ये इश्यूज आपकी होंगे ही नहीं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है when I started, मैंने भी थोड़ा बहुत इंडिया में सीखा, then I completely left India because एक्सपोर्ट हमेशा टारगेट रहा है, इंडिया कभी टारगेट रहा ही नहीं है, तो सीखना भी मैंने ज्यादातर उन्हीं से सीखा है। तो जितना डेफिनेटली उनके वैक्सेस अलग हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझे अपने वैक्स के साथ करने पड़े और काफी समय मुझे भी देना पड़ा है, बट वन थिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम इज यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, यू शुड नो आप किसके साथ खेल रहे हैं, what you are dealing with. If you are sure enough कि आप किसके साथ खेल रहे हैं, then it becomes really, really very easy to make your own combinations for peelers, for your wax sachets, for your wax melts, and for your container candles, small or big. और अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, सिंस आई डोंट नो कि उसमें क्या ब्लेंड होगा, यू पुट इट इन लेयर्स, मतलब आपने पहला लेयर डाला, थोड़ा सा टैप कर लो ताकि वो कॉर्नर्स में सेट हो जाएगा, देन जब एक थोड़ा मिल्की सा हो जाता है ना, ऊपर ठंडा होने लगता है, मिल्की हो जाता है, देन यू फॉर अ सेकंड, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना छोटा बड़ा मोल्ड है, देन वो थोड़ा मिल्की होगा, देन बट डू नॉट वेट कि वो हार्ड हो जाए, वरना ओवरलैपिंग लेयरिंग दिखेगा, बिकॉज वाला वैक्स अगर पूरा ठंडा हो गया और उसके ऊपर आपने गर्म वैक्स डाल दिया तो वो कोटिंग करेगा, लेयरिंग करेगा, तो जब वो मिल्की होता है ना उसी टाइम पे आप डालिए, तो वो सारे एजेस पे कॉर्नर से मिलेगा। कई बार जब मैंने इंडिया में भी देखा था, दे डोंट टीच यू टू प्री कट द मोल्ड्स, ये बहुत जरूरी है, इफ यू आर मेकिंग पियोने, इफ यू आर मेकिंग हार्ट, इफ यू आर मेकिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड मोल्ड्स विथ एंजल्स जिनके विंग्स हैं, फेदर्स हैं, 3D molds, you know. If you are using any 3D mold, you need to pre-cut it in a proper way so that आप जब इसे ओपन करेंगे तो वो बिल्कुल भी मोल्ड में से आपका प्रोडक्ट का कोई भी पेटल नहीं टूटेगा and it will come out very cleanly. Pre-cutting of a molds is very important, but there is a strategic way to pre-cut the molds. Otherwise, wax पूरा spill हो जाएगा. प्री कट क्या होता है मैम? वो क्या होता है? You have to cut the mold. ओके। Usually, I'll show the mold also. जब हम लोग कैंडल का डेमो करेंगे, I'll show the mold. You need to pre-cut it. जो पियोनीज हैं, चाहे अब तो जो बड़ी पियोनीज हैं जो अराउंड 150 ग्राम्स का एक बड़े आ रहे हैं, सॉफ्ट सिलिकॉन में आ रही हैं, ट्रांसलूसेंट सिलिकॉन में, वो तो अच्छा डीमोल्ड हो जाएंगे क्योंकि बेस ब्रॉड है, बट जो पियोनी छोटी है जहाँ पे माउथ सिर्फ 1 इंच मिलता है, ओपनिंग पोरिंग वाला जो रीजन है वो बहुत छोटा होता है, वो पियोनीज हो गई, या आपका कॉम्प्लिकेटेड 3D रोज हो गया जो अभी वैलेंटाइन पे बहुत आ जाएगा, कपल कैंडल्स जो होती हैं जो वैलेंटाइन पे बहुत, अभी वैलेंटाइन छोड़िए अब तो मोस्टली हर ओकेजन पे कपल कैंडल्स लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो जो कैंडल्स है उनका जब हाइट बड़ा होता है देन ऑल्सो यू नीड टू प्री कट इट, ताकि हाँ हाँ ताकि आपका डीमोल्डिंग के टाइम पे कोई भी कान, नाक,
या हाथ या चेहरे का हिस्सा या फ्लोरल फ्लावर्स के पेटल आपके गिरे नहीं और वो क्लीनली निकल के आ जाए। तो प्री कट करना एक सर्टेन लिमिट तक बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा कर दोगे वो पूरा नीचे गिर जाएगा, वैक्स फिल हो जाएगा। ओके, Thank you. so let's make, thank you. Someone else was also there to ask the question. कसं ते उघडा आणि त्याचे 100 ग्रॅमचे ते कास्टिक सोडा ते भरायला द्या. Anyone else? Fine. So I guess जिन्होंने पूछा उन्हीं से उनका क्वेश्चन हो गया होगा. Okay. So now let's make a candle, and for that I have taken 100% soya chunk. I'm gonna make into this container which holds 160 grams of my wax. I've already started. I'll shift my camera to show you how the process is. Okay. Heat the mold with heat gun and then pour the wax. Well, I'm sorry to say this, Triveni ma'am. When you preheat your mold, you are deteriorating the quality of your silicon and the intricate designs of your silicon. Okay, so because heat guns ka usage is also very what I can say, it has a lot of logic behind it. You can't just put it on the top of your silicon mold. Your silicon texturing will go, intricate designs will go over a period of time, and also the shine that naturally comes with your wax and oils over a period of time, silicon will absorb that. You should know what your molds can also do with your product. Okay, so this is one solution, I completely agree, but not for a long run time. Okay, so to reach it extreme, I have seen a lot of people using thermometers and waiting till 85 degrees and whatnot. To be very honest, there is a particular degree for sure that you should pour your wax, but definitely that is not 85 degrees. Okay, so that you have to see the correct temperatures of your waxes and your aromas flash point. So that two science should combine together. Then and then only you, when you mix it correctly at correct temperatures and you pour it in your containers or in your mold, it will come out very nicely. If you will pour your wax at a aroma at a very high temperature or at a lower temperature, then they will not be able to form the bonds and your candle will not have a good aroma through. So the temperatures, it's not only the wax temperature, it is also the flash point of your aroma. Okay, so let me shift the camera so that I will be able to show you the candle. Okay, so today I'm going to use my Kesar aroma. For that, as season is coming, now this I've already calculated the percentage of beeswax depending on the container I'm using. So let me just shift the camera so that you all will be able to see. Kaku. Hi, hello. Can't see. So can you see this wax melting? So you have to make sure that every time you melt your wax, it has to be on a double boiler and it should not be on direct heat. Okay.
So I'm using my hot plate and it has a self arrangement to have a double boiler system. I have kept my temperature at 120 degrees Celsius, 120 degrees Fahrenheit to melt my wax. Okay. You may be doing it in the oven. आप oven में कर सकते हैं, right? So oven में आपको अगर आप wax melt करने वाले हैं, so you have to make sure that you put it for 10 seconds, take it out, oven में से बाहर निकालिए, stir it properly. Again, if required, put it back to your oven to melt it 100%, right? So there is a little bit of wax left in it. So I'm gonna stir it. Now, since my jar itself has a color, so I'm not going to add any color. If this would have been a bit of transparent jar or some amber color jar, I would have added a little mild color just for appearance. But that jar itself is very flashy, so I am not going to add any of the color to it. Now this wax is 100% melted. And now I'm going to check the temperature of the wax. आपको हमारा thermometer डाल का please. So that at correct temperature, as per my fragrance flash point, I'll be adding my aroma to this. But when I do it on my major production with water as a double boiler system, usually I really don't use a thermometer to check the temperatures because water will maintain the temperature of the wax. Now, since I have used a direct heat process with the arrangement of a double heat process, or when I do it in an oven or OTG, I definitely use my thermometer to check the correct temperatures so that because of high temperature, my aroma will not be get killed off. Okay, it won't be. So it's still very high. Yeah, अशायाच्यात भरायचं आहे ना टॉपिक. Yeah, 100 ग्राम. मग ह्याच्यात ताव परवा. So I'm going to wait and keep on stirring it so that the temperature will come down. What has to be the temperature of this? See, that all depends on the flash point of your aroma. Now the Okay. flash point of my aromas is around 95 degrees. But you should know the flash point of your aroma. Now flash point का मतलब क्या होता है कि वो point जहाँ पे आपके अरोमा आप जब कैंडल लिट करोगे स्प्रेड होगा. हाँ. तो वो आपका जो मैन्युफैक्चरर है वही आपको बता पाएंगे या आप Okay. जिनसे वेंडर से खरीद रहे हैं वो आपको आपका अरोमा का फ्लैश पॉइंट बता पाएंगे क्योंकि सिर्फ वैक्स के टेम्परेचर से जादू नहीं होगा. आपको आपके अरोमा का भी फ्लैश पॉइंट पता होना चाहिए और आपके Right. वैक्स का भी टेम्परेचर पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पे वो अरोमा के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो हाँ. आप जैसे प्री ब्लेंड यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग प्री ब्लेंड यूज कर रहे हैं कंटेनर का अलग पीलर का अलग, तो आपको आपके वेंडर से पूछना चाहिए क्योंकि देखिए हम लोग जब सीखते हैं ना लोग सिर्फ वेंडर डिटेल्स दे देते हैं बट ये जो बेसिक साइंस है नहीं होता, फिर हम लोग उनको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना वो नहीं आता. प्री ब्लेंड्स के साथ ये इट्स लाइक लव अफेयर में धोखा है वो. मतलब डोंट टेक मी अदरवाइज बट इसे आसान तरीका नहीं समझा सकती हूँ मैं कि प्री ब्लेंड्स का ना आप जज नहीं कर पाएंगे. हाँ. ये उसका फ्लैश पॉइंट क्या है क्योंकि प्री ब्लेंड्स में
कई बार लोअर क्वालिटी के वैक्स को हाई क्वालिटी वैक्स में मिक्स होता है, जैसे पैराफिन को मिक्स कर देंगे सोया के साथ इन सर्टेन परसेंटेज टू मेक इट हार्ड, और थोड़ा स्टेरिक एसिड के साथ टू मेक इट हार्ड एंड गेट योर मोल्ड कैंडल। ओके, और वही आपका अगर सॉफ्ट या कंटेनर का बनाना है तो वो लोग दे विल नॉट थिंक ऑफ कि मैं 1 वीक से, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू मेक अ कैंडल विद दिस उर्ली, ओके, नाउ जितना भी आप फोटोज देखेंगे हमेशा उर्ली में सिंगल विग लगा देंगे। अब सिंगल विग से आप मुझे बोलिए बताइए क्या ये पूरा वैक्स मेल्ट बना पाएगी पूरा एक दिया? इट विल मिनिमम नीड 2 विग्स। अब जब आप इसमें 2 विग्स लगाओगे यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपका वैक्स प्रॉपर हार्ड है, ताकि ये मेल्ट पूल जो है आप कंट्रोल कर पाओ और फ्लेम हाई ना जाए। व्हाट माय पॉइंट? तो सेम जब मैंने ये कैंडल अभी बनाया है, अब ये सिंगल विक के साथ भी बनेगा, ये डबल के साथ, लेकिन जब ये सिंगल विक के साथ बनेगा तो इसके साथ परसेंटेज ऑफ बीज वैक्स जो है वो अलग होगा। अब ये जब डबल विक के साथ बना है आई हैव टू कंट्रोल द मेल्ट पूल एंड द हाई फ्लेम, तो इसमें जब बीज वैक्स का परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि आई नीड मोर हार्डनिंग। जब मोर हार्डनिंग करूंगी तो आई विल कंट्रोल द मेल्ट पूल एंड इम्प्रूव द बर्निंग आवर्स। और एक गड़बड़ सभी लोगों का होता है कि ये भूल जाते हैं जब हम लोग सिरिक एसिड डाल रहे हैं या कोई भी फॉर्मूला बना रहे हैं, आप जब इस तरीके के कंटेनर यूज करते हैं, चाहे मेटल का कंटेनर हो या ग्लास, नाउ दिस इज ग्लास कंटेनर, ओके, तो जब ग्लास कंटेनर यूज करेंगे और आपका जब फर्स्ट मेल्ट पूल बनता है, मतलब फर्स्ट लिक्विड बनेगा, तो धीरे धीरे वो हीट ग्लास में भी ट्रांसफर होगा डाउन, और वो हीट आपके बचे हुए वैक्स को हेल्प करेगा टू मेल्ट। आप में से कितने लोगों को मुझे बताइए कि पता है कि वैक्स को भी मेमोरी होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि वैक्स को मेमोरी होता है? मुझे मी लिख के बताइए, नॉट माय स्टूडेंट्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि वैक्स का मेमोरी होता है, उसको भी दिमाग है? वैक्स हैज इट्स ओन मेमोरी। जब आप कोई भी कैंडल लेते हैं, चाहे आपका बना हो किसी और ब्रांड का हो, और अगर आपने बर्निंग इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ा है और आपने पहले 20 या 25 मिनट में विदाउट इसका फर्स्ट मेल्ट पूल, मतलब जब आप कैंडल लिट करते हैं और एक्सट्रीम एंड तक एक लिक्विड पूल जब बनता है, उससे पहले अगर आपने उसको बंद कर दिया बाय एनी रीजन कि हाँ चलो अभी फंक्शन हो गया है या मुझे इतने देर तक ही करना है तो मैं क्यों करूं, अगर आपने बंद कर दिया, नेक्स्ट टाइम वैक्स आप जब भी कैंडल लिट करेंगे तो आपका कैंडल उतने ही मिनट जलेगा, बिकॉज उसने मेमोरी स्टोर कर लिया। अगर आपने 20 मिनट्स लेट किया होगा, वो अगली बार 20 मिनट्स लेट होगा एंड इट विल पुट इट ऑफ इट्स ओन, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। आपने 10 मिनट में किया होगा, अगली बार वो 10 मिनट ही करेगा, क्योंकि जो एक्सट्रीम एंड पे वैक्स है उसको पता ही नहीं मुझे जलना है, मेरा पर्पस क्या है। तो ये सारी चीजें मुझे कभी भी इंडिया में सिखाई नहीं गई थी। So that this all what I am sharing with you right now, this is I got it from USA and Africa, जो मेरे mentors हैं। तो कैंडल्स अगर आपको सीरियसली सस्टेन करना है, यू शुड रियली अंडरस्टैंड योर मटेरियल वेरी वेल एंड यू शुड रियली रीड, एटलीस्ट बिगिनिंग में इट्स अ वन टाइम एफर्ट टू रीड। बार बार थोड़ी पढ़ना पड़ता है, एबीसीडी एक बार सीख लिया तो सीख लिया ना, रोज थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग, राइट? वी जस्ट इम्प्लीमेंट एबीसीडी। So same is with the knowledge of making the product. Once you learn it, then बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है, you will just improve it. Okay. So now it has reached to the correct temperature. Still it is little high. So I'm just giving it, I'm just stirring it to make sure that it reaches the correct temperature. I'm not going to add my fragrance oil before it reaches the correct temperature. But when I teach these candles in water double boiler, you will not need any of the thermometers. Thermometers are required only and only when if you will make your candles in
oven, OTG, microwave, or such direct heat. Otherwise, you will not need. काकू मी 200 मी आपोआप जातील बाहेर. कुठे जाणार आहे? नाही चालणार, संपला विषय. Okay, now this has achieved the correct temperature and I'm going to add the aroma to it. When you add the aroma, you have to make sure that you will mix the aroma minimum to minimum 2 minutes. Otherwise, it will not make a bond with each and every wax particle, melted wax. दुसऱ्या क्रेट्स मध्ये बघा. And make sure that you rotate it in a circular way and not zigzag kaise bhi karke. You will break the bonds. So make sure that you stir it in a circular way minimum to 2 minutes so that it gives the best aroma and makes the bonds correctly. If you will add it when it is foggy या थोड़ा क्लाउडी हुआ है तब आप अरोमा ऐड करेंगे, आपको लगेगा कि अरोमा मिक्स हो रहा है बट इट विल नॉट मेक अ बॉन्ड. आप जब पोरिंग करेंगे या कंटेनर में या आपके मोल्ड कैंडल में वैक्स विल स्टार्ट स्वेटिंग. स्वेटिंग का मतलब होता है कि ये आपका जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीट और वो ऑयल रिलीज करेगा. इफ यू विल ओवर डू द ऑयल तो भी आपका वैक्स जो है वो स्वेटिंग करेगा. इट विल नॉट एक्सेप्ट द अरोमा करेक्टली. Now I've already kept my container on the weighing scale to make sure that I pour 160 grams in the container, not less and not more. कई बार मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा है और बहुत सारे यूट्यूब में भी दिखा है रैंडम पोरिंग with that pot. I really doubt how people do that random pouring and still make the profits of it because एक जैसा pouring कैसे हो सकता है? I have no clue. So what we prefer is putting on weight machine every time, even if it is 100 candles, 200 candles, every candle will be put on the weight machine. So now this is how it will be made. And now I'm not going to touch my wicks at all because नीचे अभी ये गर्म है. अगर मैं अभी विक्स को स्ट्रेट करने जाऊंगी तो ये विक्स निकल के आ जाएंगी, सस्टेनर्स को छोड़ देंगे. I'll wait till it becomes little foggy on the top. इसका मतलब बेस हार्ड हो गया है. And then I'll put it back in a straight center form and add my wick holder. Okay. Now this candle we will cure it minimum to 72 hours and then only we will utilize this candle. Otherwise before that it will not be cured at all and it will not give the best aroma. Minimum to minimum 36 hours to 48 hours to 72 hours depending on container. Now this 160 will need minimum 36 hours of curing. When we make big candles of around 750 grams or 500 grams, it will need 72 hours of curing time. Once they are 100% cured, then we will trim the wick and decor if required and remove the sinkholes of it. Now sinkholes
will definitely be coming in next 24 hours. So by tomorrow afternoon, we will cure the candle, and if required, we will decor it. Or I am not a good fan of decoration. I love to have the white candles, as most of my clients are more into corporates and all that. So they, for gifting, they will definitely ask, but otherwise for regular lighting, they'll not ask a decor. But if required, I'll decor and I'm done. Okay. So हाँ झालं. त्याला रबर बँड लावा म्हणजे ते इकडे तिकडे जाणार नाही. Okay, so that was all from my end, and my last question, if you have any further questions. Otherwise, all those who want to learn, let me know. If you want to learn and start the business of your own and become your own king, you know. सबको आइसक्रीम पसंद है, बट उसके साथ कुछ फ्रीबीज आती है ना तो अच्छा लगता है. जेम्स हो गया, या उसके ऊपर कभी चॉकलेट आ गया, चॉकलेट सिरप आ गया, सॉफ्टी बन गया. इट मेक्स मोर sense to have addition toppings on the thing. So your any extra income every month will make and secure your future for sure. There is no age barrier to start a business, to you know start your journey of entrepreneurs. Now, before you decide whether you want to learn or not, I would like to tell you there are hell of an options available in government schemes for all entrepreneurs. Even if you don't have money, you can raise the money with the help of your banker. तो हम लोग बहुत सारा मिथ्स लेके बैठते हैं बहुत बार कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो कैसे करेंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे मिथ्स बाद में हैं. First, learning your research and development with your raw material, your product, delivery of the product, and then the funding. हम लोग इतना ज्यादा राई का पहाड़ कई बार हो जाता है. I am not saying any negative thing. I'm just trying to ease out you the difficult side of making candles or any business. First, most important is your trials, your learnings, your enjoyment of your product, and then delivering your enjoyed product to someone else. अब जो प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ है, उसके आगे बजट क्या होगा हम सोच रहे हैं. वो बजट आपका फोर्थ फिफ्थ स्टेप है, लेकिन प्रोडक्ट बनाना, सीखना, उसमें R&D करना, वो आपका पहले मेजर 3 स्टेप्स हैं. वो स्टेप्स आपकी बाद में आएंगे. Last but not the least, when you deal with aromas or aromatic products, okay, anything which has essential oil or fragrance oil, कोई भी product होने दीजिए, not only candles, but any soaps, bath salts, bath bombs, wax melts, wardrobe freshener, anything, okay, then it is, you're actually making sure that you are getting a therapeutic benefit of the aromas to your brain. Every aroma has a best benefit for your brain. For example, if you want to actually reduce your weight, okay, then you should try with grapefruit aromas. ग्रेपफ्रूट जो फ्रेग्रेंस है, या आपका कॉफी फ्रेग्रेंस के साथ अवोकाडो, या कॉफी के साथ वेनिला, ऐसे कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप डाइट बहुत अच्छी तरह फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो अरोमाज है आपकी ब्रेन को एक सिग्नल देंगे कि मुझे सूडो हंगर नहीं करना है, मुझे ओवर ईटिंग नहीं करना है. Okay, every aroma has such benefits on it. For example, concentrate नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, हम, कोई भी, you should always try for citrus aroma, a combination of orange with sandalwood, cinnamon with orange,
to settle your past thought process and concentrate and focus on one thing. So when you actually involve yourself with aromas, you're not only making your product, but you're also giving a peaceful therapies to your brain. Do not forget the by benefits of your uh, aromas. Okay, that is the best part you can deliver to yourself, right? So let me take Divya ma'am's question. Warm jar pouring. Well, Divya ma'am, I now from what you have texted, आपने जो text किया है उससे मैं समझ पा रही हूँ कि आप 80 या 85 डिग्री पे वैक्स पोर कर रहे हैं. That is not the right thing. आप काफी सॉलिडिफाई होने के बाद कर रहे हैं, इसीलिए जब पोरिंग के बाद भी आपका लगता है. और देखिए प्री हीटिंग ऑफ जार जो है वो करेक्ट होता है. प्री हीट करके इसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन प्री हीटिंग बेसिकली उन सिटीज या स्टेट्स या कंट्रीज में करते हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है. हम लोग जो इंडिया में है, जहाँ हैबिटेट, या अगर आप नॉर्थ साइड में है या नॉर्थ ईस्ट साइड में है जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा शायद अब 9 डिग्री से 8 डिग्रीज होगा, वो टाइम पे डेफिनेटली आपको प्री हीट करना पड़ेगा. लेकिन आप सोचिए अगर आप 10-12 कैंडल्स बना रहे हो और आपने प्री हीट पहला कैंडल को किया है, वो 10वें कैंडल तक तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, राइट? वो टेम्परेचर पे नहीं रहेगा जो आपने हीट गन से प्री हीट किया होगा. तो दैट इशू कैन नॉट बी सॉल्व बिल्कुल भी, राइट? सो दैट इज फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट. यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका वैक्स का और आपके फ्रेग्रेंस का फ्लैश पॉइंट क्या है. इंडिया में जितना भी मैंने सीखा है सब लोग 80-85 डिग्रीज बोलते हैं. एंड आई एम नॉट थ्रोइंग एनी नेगेटिव थॉट्स फॉर व्हाट दे हैव टॉट यू, बट द थिंग इज एट दिस टेम्परेचर आपका वैक्स सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है. तो सॉलिडिफाई होता हुआ वैक्स आपको दिखेगा भी नहीं, वो घी जैसा होने लगता है, आपको समझेगा भी नहीं. और जब वो गर्म जाता है तब नहीं होता, जब वो ठंडा होता है तो लाइन्स आती है. तो आप जिनसे भी वैक्स खरीद रही हैं, you have to make you need to contact them and ask them at what temperature actually they start melting. उसका मेल्टिंग पॉइंट और आपके अरोमा का फ्लैश पॉइंट, इसका एक कॉमन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा. एवरेज आउट करके at that temperature only you need to pour your this. I completely understand, but since you have not bought anything from me, I can't give any random temperatures to you. Okay, it's not कि मेरे से raw material low, it's just that I have no clue about the quality of your raw material. I can't just randomly tell you नहीं नहीं 90 पे कर दो, नहीं नहीं 85 पे कर दो, नहीं नहीं 95 पे कर दो. I'm sorry, I'm not that type of mentor. क्योंकि yes I do. So because that's most important thing to maintain the temperatures. आप कहीं भी कैंडल्स का देखेंगे ना, शुरुआत में वैक्स का बात करेंगे, कलर्स का बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर्स का बात का. या बॅग मध्ये 50 होते तेवढेच बॅग आणि तेवढीच. So that is the reason I can't really abruptly tell you कि आप इतने में पोरिंग करिए और उतने में पोरिंग करिए. शायद मेरा टेम्परेचर बताना भी गलत हो सकता है. तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आपका वेंडर ही आपको सही बता पाएगा. मेरे वेंडर्स भी बताया है. सी आई हैव लर्न, मैंने बोला कि मेरे मेंटोर बेसिकली अफ्रीकन मंगोलियन है, जिनसे मैंने सीखा है अरोमा थेरेपी भी और
कैंडल्स भी, और उनकी फ्लैश पॉइंट्स जो थी उनके कंट्री के अरोमा के हिसाब से अलग थी। तो जब मैंने यहाँ R&D करना शुरू किया तो मेरे वैक्स और फ्लैश पॉइंट्स अलग हैं, तो उसका एक कॉमन पॉइंट मुझे निकालना पड़ा है। आप फ्लेक्स के साथ जब काम करते हैं फ्लैश पॉइंट्स अलग होगा, और चंक्स के साथ जब काम करते हैं तो फ्लैश पॉइंट्स को टेम्परेचर्स अलग होंगे, क्योंकि फ्लेक्स थोड़ा लोअर टेम्परेचर से मेल्ट होते हैं, उसमें कोकोनट ऑयल पोर होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। सो दैट that you need to adjust, and then you will be able to add your aromas to it. Stir it correctly. If you will not stir it correctly, तब भी bonds नहीं बनेगा। छाछनी बनाने जैसा है अरोमा को, जब आप वैक्स में डालते हैं इट्स लाइक मेकिंग छाछनी। वो एक तार बना रहे हो, लूज बना रहे हैं, that all depends on your acceptance of your water and the sugar you are adding to it. Okay, so I'm really sorry, इस मामले में अभी तो नहीं कर पाऊंगी जब मुझे रॉ मटेरियल का नॉलेज नहीं है, आपके रॉ मटेरियल का। ओके, सो एनी फर्दर क्वेश्चंस? मैम आपने बोला था कि मोल्ड्स का आप बताओगे कि ओपन मतलब कटिंग किस टाइप से होती है आपके पास जो रखे हुए हैं मोल्ड्स जो आप कट करे हुए हैं वो आप दिखाओगे, तो कैन यू ये प्लीज? स्वाति मैम, ये स्वाति मैम, हेलो मैम। यस मैम आप बताने वाले थे, मैं मैसेज करने वाली थी एक्चुअली। आप ओके क्लास में आ गई थी करके मैं पूछ रहा हूँ। ओके, मैम so we आप are going to have a presentation for that. Yes. नो मैम। मैंने आपको बताया ना मैम, वो पिलर कैंडल्स में व्हाइटिश जैसा आ रहा है, पैराफिन और सोया ब्लेंड मिक्स किया तो कुछ आफ्टर सम डेज इट्स क्यूरिंग होने के बाद Yes. उसका इश्यू उसका चेंजेस क्या करने See, का है? that is because paraffin का खुद का नेचर है फ्लेक्स क्रिएट करना। Okay, so and depending on the shell life of your paraffin wax also, that will also need to be catered. If it is kept open, not airtight, still it will lose the oil inside. उसका सोया जैसा नहीं होता, it has no much of a self holding power. तो अगर पैराफिन आप for example, I'll share my own experience since I am into zero paraffin manufacturing, though I started with paraffin back 10 years before, but due to my health issues, I completely stopped in a month using paraffin. But to show people who visit my factory or my unit, we have kept some half kg or so. Due to heat, now it has become like a gel ball. Okay, now this is very old paraffin of around 3 years back. Now if I'll use that paraffin to make a candle, it has lost most of its oil, self oil. It is going to create flakes for sure, even if I mix soya too. So you should know that the expiry of your product and how long and how it has been kept to use it. And paraffin without stearic acid won't work much. It needs a paraffin stearic acid to hold on to itself. Even if you add a soya, it may have it. Then on the top of it, when you add a color to it, your colors also matter. If they have pigment kind of a thing, if they are pigmented, then they should be oil absorbing pigmented. If they are water absorbing pigmented, then still you will face the same problem, the flaky problem. Okay ma'am, can I go to उस सोया चंक्स के साथ बीसवैक्स यूज कर दूं क्या हार्ड होने के लिए? Yes, you can do that. You can do. Whatever you experiments you are doing, make sure that you are making your own generals for that. Otherwise, you will forget after some time. Because I don't remember what I had yesterday lunch. So remembering a formula is also not that easy. वो फुल वाइटिश आ रहा है, तो मैंने चेंज किया 70-30, फिर भी आफ्टर सम टाइम इट विल शो वाइटिश मैं हूँ करके। See, as I mentioned before also, it's not only one raw material. You are combining 2-3 raw materials to get one product. So it's when you want to make a perfect coffee,
then you should have a very good powdered coffee. You should know how to make a decoct out of it and how Yes. much milk to put. Then you get a perfect South Indian coffee. Otherwise, you won't get. Even if you have a Kurg coffee, the mother of the mother of coffee land, right? The Yes. best coffee you get it out of Kurg. So even if I have the best Arabica from Kurg, I'll not be able to make it. I'll just have an aroma and a taste, but it won't be like a proper South Indian filter coffee, right? So that process of Thank adding you. the correct milk, boiling the correct milk, and making a decoct out of the filter coffee, that matters a lot. And definitely the curing of that black coffee. Then only you'll have a perfect South Indian coffee. So candle making is also like that. It sounds difficult, or you may think जो लोग नए हैं कि अरे बाप रे इतना सब कुछ करना पड़ेगा. Think like कि आप लोग first पिलर day कैंडल school में भी गए यूज हैं. कर सकते हैं क्या ये Yes, सोया और बीसवैक्स का yes, प्रपोजिशन? yes. You can. So थैंक just यू मैम. imagine आप first day जब play school जाते हैं, तो हम लोग एक छोटा सा रुमाल नाक पोंछने के लिए, एक छोटा सा टिफिन, एक छोटी वाटर बॉटल, एक सिपर बॉटल, छोटा सा कलर्स और एक कोई एक्स्ट्रा पैंट ताकि कपड़े खराब हो गए तो चेंज करने के लिए. इट्स जस्ट लाइक दैट. इट्स द फर्स्ट डे. दैट्स इट. अदर देन दैट, वंस यू गो फॉर 2-3 days, आप वहां के राजा हो जाते हैं प्ले स्कूल में, राइट? हमारे बच्चे भी ऐसे हुए हैं और आगे भी होगा. तो ये जितना कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, कुछ ट्रेनिंग्स नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करेगा. वंस यू गेट अडप्टेड टू इट, जैसे स्वाति मैम ने शेयर किया दैट शी मेड सम फॉर्मूलाज ऑफ इट्स ओन, ऑफ हर ओन, एंड स्टिल शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू गेट द बेस्ट आउटपुट. It's going to be a learning process thoroughly, one by one. Okay. So I will request Bhavna to start the presentation for all those people who want to learn. How many of you want to learn before she starts the presentation? I want to know how many of you really want to learn making it. Does it make sense only to start the presentation? Right? Then it's time to say goodbye. Anyone wants to ask any questions? Someone raised the hand. Mishi ma'am, you want to ask anything? Yes. So someone just texted that show us the pre-cut mold. Now these are pre-cut molds. Okay. So this is basically a girl running with a kite. इसका output है इसका. So for such intricate designs and 3D candles, we need to pre-cut it. And when you have such big molds also, removing a candle becomes very difficult, as the silicone is very, very thick. Mishi, we will be sharing the presentation also and a recording by tomorrow morning, a YouTube link. You can just go and watch it for sure. Okay. Yes, Ravir ma'am, you have a question? मैम आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, मैंने प्री कट के लिए ही पूछा था आपसे. Okay, great. मुझे फिर भी हाथ ऊपर दिखा तो I thought I missed something. नो इश्यूज, सॉरी. Anyway, yeah. Thank you, Mishi. So this is me, Namita, founder of New Glinton Glow Private Limited. Now this is my third brand. छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, बाद में तो जाने ही एक दूसरे को. I started this business in 2016 when I was really earning very good in my bank. I worked for a banking industry for 14 and a half years. And when my daughter born in 2020, in 21 I left my job. It's not because of the responsibilities of my daughter, but by that time I understood that my business and my bank and my daughter
all three are, making a triangle all together. And leaving a job was uh, kind of an easy decision for me. Definitely, there was a lot of hindrance from my end. बहुत सारा घर में था कि your 14 years you served, मेरा promotion due था उस साल, and promotion के साथ बहुत सारा perks भी मिलने वाला था. But sometime you need to take some hard decisions for your life that will make your further life, जो शायद आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके आसपास के लोग को समझाना या समझना वो टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता है. So my husband was quite supportive that time and he said, okay, fine. If you wish to leave, just leave it. क्योंकि बैंक्स में यूजुअली जब क्लोजिंग होता था, मैं 11 बजे लौटती थी. नो संडेज, नो सेकंड. आपके लिए बैंक क्लोज होता है, बैकएंड पे सब काम चालू होता है. तो ऑडिट आ रहा है, संडेज भी काम करो, हॉलीडेज भी काम करो. एंड आई वाज नॉट एबल टू गिव टाइम टू माय डॉटर. So, and that was my priority that time, leaving that childhood back in my life. So I left my job on a very happy note, with whatever business was running at that time. Not making good figures क्योंकि ऑफिस और जॉब और प्रोडक्शन के लिए टाइम ज्यादा मिलता नहीं था. I was handling it singly that time. But then once I left, I had a good staff to work with me. And then in 21, we formed our second brand, that is Calypso, which takes care of export. And this is a third brand, which is a new 1 year baby, private limited, because now we are the part of a Startup India campaign. We are working on to get the registrations under Startup India campaign run by Government of India under Atal Bihari Vajpayee Commission. So, this all 10 years of journey I share with each and every student of mine, so that there is no scope of U-turn in your being an entrepreneur. Okay. This whole journey started because of my dog. She was going through some psychological issues, and first time I came to know about dog psychology and aromatherapy working together. So in 2016, I started aromatherapy on her and simultaneously on me. So, aromatherapy is a basic brand concept of mine. Mostly my clients are into meditation, autism, schizophrenia, postpartum, depression, and all that. My niche clients are those. Whereas when I teach considering each and every, right from gifting to your laddu, those desert candles and all that, and definitely the therapeutic products and utility of all these fragrance oils or essential oils that will benefit yourself, right? I did my MBA in finance, and my specialization is MSME for women's entrepreneurs. So all this education, banking knowledge, and definitely this knowledge which I catered in last 10 years has helped me to go further. Candle is definitely my first product, whereas we have another 11 product manufacturing units based out of Maharashtra, Aurangabad, and we make everything from the scratch. So this is a very short introduction of myself. Next, Bhavna. So what all you are going to learn. Now first, I have just slightly introduced you to the industry with the figures, but there is a lot of industry and the okay. Now there are various tools which are available in your kitchen. You really don't need to buy the tools from the market. So we will first considering whatever is available in kitchen and minimalize our investments and concentrate more on raw material and our R&D. So when I started back in 2016, it took me 2 years to learn. I have no clue how much I've invested in the raw material back that time, because pockets were filthy, and it was fun and learn kind of a thing. So, but when I decided my vendors in India after learning in US and some few here in India, from 2018 till now, and maybe for longer term in future, I have only those vendors giving my raw material, right? So I know what I'm buying, I know what I'm making. I don't have to involve much of a time in my research and development when it comes to a ready product, right? So these 2 years of hard work has really
given me a very nice output in my future. Now, different types of waxes, PDF will be provided with the formulations with this and a detailed knowledge about it. You will know how you're going to demold your candle, how you're going to add the wick to your candles, especially the container mold candles, and what is the role of your wigs, because wig is your mother of your candle. If your wig is not correct, even if you make the best blend or use the best quality of your raw material, your candle will not lit. Okay. Then how you're going to choose your colors, what colors will go, as how I shared with the Swati, that you really need to understand oil, water combinations very well and the pigments very well. पीला कैंडल्स, कंटेनर कैंडल्स, जेल कैंडल्स, एक्सप्रेसो जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, with the help of your gel candle will be taught in the basic foundation course. Okay. Next, Bhavna. Right. Then your botanical candles, decorations with your botanicals and all, marble effect, जो आपका again in a trend which is going on, the marble effect will be taught. Then how the sinkholes appears, how you're going to clear your sinkholes. Without clearing your sinkholes, your candle won't lit correctly. So first, most important is you're clearing your sinkholes as a priority. Precautions that you're going to take to solve your problems as well as your client problems. What are the common problems your client may face and ask, because आप exhibitions भी जाओगे, आप किसी वेबसाइट पे करोगे अपना Amazon, Flipkart या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाओगे या इंस्टाग्राम पे सेल करोगे या खुद की वेबसाइट डेवलप करोगे, तो ये सारी चीजों के या सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स विल बी गिवन इन द sessions during while you learn and also the post sessions. Now this is our basic foundation course. Yes, Bhavna, next. Now this is the master course where we will deal with combination of aromas, combination of wigs. एक wick क्यों लगाना है, 2 wick क्यों लगाना है, 4 wick क्यों लगाना है, 7 क्यों लगाना है, and how you are going to choose your aromas, how you are going to, now it is, I'm trying my best to explain. If you are using, for example, the aroma which has its own natural color, okay, and if you add a color to it, it is not going to give you a output. For example, जैसे रजनीगंधा अरोमा है, मोगरा है, कैमोमाइल है, बर्गामोट है, मरा है, they have their own natural colors, green, dark brown. Coffee also has its own dark brown color. Now, if you will add any color to it to look more vibrant, the natural aroma color will overtake your candle color and it will not come out correctly as expected. So that will be taught in depth, so that whenever you will make your trial candles also, you will understand which aroma and which color to coordinate, right? Otherwise हमने लिखा है इसमें लैवेंडर अरोमा है और कैंडल हमने येलो कलर का बना दिया है, तो येलो कलर और लैवेंडर अरोमा का कोई eye coordination nahi hai. When you say lavender, it may be little purple or white or a lilac satin color or a dark purple color, okay, violet kind of a thing, but it won't be yellow, orange or pink, correct? So that coordination is very important when you make a candle and when you actually deliver a candle, right? Right temperature and precaution जो अभी भी मैंने आपको डेमो में बताया है, that will be taught to you. Role of a wig, as I mentioned in a basic course, यहाँ पे role of a wig जो master class में है, that is with the concept of 1 wig, 2 wig and with respective of hardening your waxes. Okay, जैसे percentage of beeswax कब बढ़ाएंगे और कितना diameter पे हम लोग 1 wig यूज करेंगे या 2 wig यूज करेंगे, वो आपको डिटेल में साइंटिफिकली बताया जाएगा ताकि आपकी कैंडल 100% करेक्टली लिट हो. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योरिंग. आप क्योरिंग किए बिना कैंडल नहीं बेच सकते, आपका कभी भी अरोमा करेक्ट नहीं आएगा. ओके, ये बहुत जरूरी पॉइंट है. डिपेंडिंग ऑन योर कंटेनर, क्योरिंग आपका आगे बढ़ेगा. 24/7 एक कम्युनिटी में आप ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आप अपना थॉट प्रोसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं
वो लोग आपको अपने उनके इनपुट्स देंगे सो दैट यू वी ऑल ग्रो टुगेदर, राइट? वेंडर डिटेल्स दिया जाएगा, यू कैन टॉक टू देम डायरेक्टली, वी हैव नो फर्दर कनेक्शंस विद द वेंडर्स। जो वेंडर से मैं रॉ मटेरियल खरीदती हूँ वही रॉ मटेरियल का वेंडर्स मैं आपको दूंगी for sure. My vendors have a very high MOQ, to be very honest, but same quality, we sell it. It is completely your choice if you wish to buy any raw material from us for your trials at the minimal possible quantity. With us, there is no MOQ. There is no MOQ. Okay. So this is from my end, and there are few bonuses that we are coming up. Yes, Bhavna. Next, please. This is what the bonuses, your designer candles, Indian sweet candles, and marketing tips, and your certificate of participation. That will be given to you for your course. Okay. So next, Bhavna. This is what the fees is. Our original fees is 2,999. Now there is a system. This festival's discounted price is 110 for today, and anyone who pays off in next 10 minutes, the fees will be 999. Okay, the session will be live. There is no pre-recorded sessions for any of the classes. All the sessions will be taken live. We will be making all the candles live with colors, with all possible options, some handmade techniques to make your rasgullas without mold, some glazing techniques without addition of any chemicals to your product, and securing packaging, labeling as per government norms will be taught. Also, there will be a guidance session during the classes only how you can actually incorporate yourself with government facilities, that is incubation centers in your nearest by session. So that all will be covered in 999 for next 10 minutes. We will open all our groups and share the scanners. You can make the payment for this. Once you make a payment, please share your screenshots in our whichever group you are into, and then we will be sharing a paid group link in your personal chat. Okay. So once you make a payment, please make sure that you share the screenshots in our groups. Any questions? If unanswered, you can still ask. If any of our previous students want to share their feedback after learning and prior learning, feel free to. So we are opening the group in next 10 minutes. And I hope I have answered all of the questions to you. So the time starts now, as we have already opened all our sessions, all our groups.
Is Maria ma'am online in this session? ते बसतंय का म्हटलं. डबल सील करा. आणि उलट सुलट करून बघा ते पडत तर नाहीये. हो पेपर लावणार आहे ना आपण, तर ते फॉलचे कशाला टाकतात. पेपर लॅप करणार आहे ना आपण त्याला. फाइन. लास्ट 5 minutes. मैम आपका ये जो सेशन है जिसके लिए ये आप चार्ज कर रहे हो, ये आफ्टर अक्टूबर अवेलेबल रहेगा? क्योंकि मैं ना अभी सितंबर से लेके मिड अक्टूबर तक एग्जाम्स, तो मैं उस टाइम तो सेशन कर पाऊंगी। हाँ. पे आप मैम मुझे आप इसी ग्रुप में आप बने रहिए, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उतने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग सिखाते भी हैं. तो उसका ऑनेस्टली कहूँ तो ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल हम लोगों ने भी कैलेंडर नहीं बनाया है कि हम लोग ये दिन में या वो दिन में या ये मंथ में वो मंथ में लेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जिन्होंने पिछले कुछ सेशंस हम लोगों से किए हैं, ओके, चाहे फर्स्ट टाइम होगा या अदर, तो नाउ दे आर आस्किंग फॉर सम अदर प्रोडक्ट्स. अगर वो प्रोडक्ट्स का ज्यादा डिमांड आएगा सीखने के लिए, तो वी विल फर्स्ट गो विद दैट प्रायोरिटी. So you please stay in the group. Every update you will get it in the group itself. And we really don't annoy हर दिन कुछ ना कुछ डाल के. Before the sessions only we will put it. जैसे आज हम लोगों ने आज सुबह डाला था. We didn't add anything. I completely understand. हम लोग इतने सारे ग्रुप्स में बड़ा annoy होता है. तो just stay in the group and at least जो भी हम लोगों की तरफ से, जैसे भावना मैम है जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है, और मैं जिस नाम से आती हूँ, दैट इज मेरा ब्रांड नेम न्यू ग्लिंट एंड ग्लो. पर्सनल लेवल पे अगर जब हम लोग ये ग्रुप में हम लोग डालते हैं, तो आप लोग बस एटलीस्ट उतना जरूर देखिए हमारे रिस्पॉन्सेस को. ओके मैम, फॉर श्योर. Okay? और अगर आप कोई भी सेशन इन अक्टूबर या नवंबर होता है, श्योरली ज्वाइन, बिकॉज Definitely. मैम ये अब इसी ग्रुप में आएगा. मतलब इसके आगे भी जितने भी सेशंस होंगे वो सारे इसी ही ग्रुप में आएंगे आपको. ओके मैम, थैंक यू. ओके. Fine. So last 5 minutes, all those who wish to make the payments. मैम आप ये जो सेशन देते हो, इसमें क्या वेंडर डिटेल्स भी आप शेयर करते हो? क्योंकि वेंडर हाँ. आपके नियर बाय की लोकेशन होंगे, और हम एमपी साइड रहते हैं, मध्य प्रदेश, तो हमारे मैम नियर जो बाय. बंदा एक्सपोर्ट करता है उसके लिए इंडिया में क्या ही है. ओके, मतलब ठीक है. हम लोग वेंडर्स देते हैं, जैसे मैंने बोला वेंडर्स डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट जो मेरे वेंडर्स हैं वो 1 लीटर 25 किलो से बाद मतलब उससे नीचे नहीं देते हैं. तो अगर आपको स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, तो हम लोग 100 ml से आपको देते हैं ऑयल 100 ग्राम्स का, और वो भी होलसेल रेट है. ऐसा कुछ नहीं है कि 1 लीटर लिया तो अलग कॉस्ट होता है, स्मॉल क्वांटिटीज लिया तो ज्यादा कॉस्ट होता है, बट वेंडर्स वोंट गिव लेस देन अ लीटर. बट स्टिल आई गिव, बिकॉज मुझे नहीं पता आप लोगों का पेइंग कैपेसिटी कितना है.
तो जो मैंने प्रॉमिस किया, मैं वेंडर डिटेल्स हमेशा देती हूँ। जैसे कलर्स के हो गए, यू कैन कनेक्ट विद देम डायरेक्टली एंड बाय इट। अगर आपका उनका एमओक्यू जो भी है, अगर वो आपको फिट होता है, आपके पॉकेट्स में फिट होता है, आपकी बजट में फिट होता है, यू कैन बाय। Okay, so now the time is up. Thank you so much for your time, and I'll see you on Tuesday. All right. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Mm. Mm.